है चला और वीडियो ही नहीं भाई पता नहीं ये करता है। चल आज करूंगी खाप क्योंकि आज तो मैं स्ट्रीम हिंदी से करेगा नहीं खाप चंगी तरह पाया करा की होन दिया ना वो मैं चैट की तरफ पढ़ा ते मैं सोचा ही नहीं। चल देख रहे हैं पूछते होगा 4 मंथ अच्छा 4 मंथ बाद आनी है डॉक्टर डूम्सडे 4 मंथ है 9 दिन 4 मंथ है हो गया अभी देखो कितने गई यार स्ट्रीम है भाई साहब ये 2 महीने पहले वीडियो डाल दी अरे नहीं हो गए हो गया है बस तो रिव्यू प्लीज भाई किसका रिव्यू करना है ये तो बता दो भाई ये स्ट्रीम स्टार्ट कर ही देते हैं भाई Sometimes I can't believe I'm still alive. She told you I ain't had it, but she lied. Boy, don't play with me, you know I'm proud. Boy, don't play with me, you know I'm proud. She giving blowjobs and I apply. She say she's starving, order her some fries. Then I ate the breast and the thighs. Then I gave the rest to the guys. You was typing crazy out your mind. This is not a typo, we reply. Now you spilling typo out your side. Boy, don't play with me, you know I'm. Boy, don't play with me, you know I'm right. Pray on our enemies when we die. We just hope the feds take a bribe. Only one gon' walk away when we collide. $20, he out his fucking mind. 10 bitches came with $1, they all dimes. They offering blowjobs and I applied. They all starving, order him some fries. Then I lick the breast and the thighs. Bitch, don't play with me, you know I'm. Boy, don't play with me, you know I'm proud. Swerving in the name of the law. 5% to 10 when I'm top. They love me in my city like I'm pop. Remember when we used to window shop? Now I just put the Porsche to the mall. They caught me the chain with the cross. Had to throw some hundos in the wash. Baby, take a seat and take it off. So much ice on me, I can't defrost. Where them that was saying I fell off. Boy, don't play with me, you know I. Boy, don't play with me, you know I'm proud. एक लाइटर दिलाना है आपसे शर्मा कर लेना ठीक है एक लाइटर दिलाना है आप क्या कह रही कृतिका क्या कह रही है तू फोन से टाइप भाई क्या बोलना चाहती है भाई गाली मत दो मम्मी पापा हैं भाई नहीं दूंगा गाली भाई भाई अपने मम्मी पापा से दूर बैठ के देखो ना गाली में क्या
मदर पकड़ तो बोला है। आज डीप ब्रेथ लो। चैट मैं कुछ जॉब नहीं करना चाहता सच्ची गल आ। जापान च एक टोर्चर लैब सीक्रेट टोर्चर लैब जापान च चले करदी ते मन्नो नहीं ये हो गया है ये किथों लभदी लिटरली ਹੁਣ ਲਿਟਰਲੀ ਚੈਟ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਟੋਰਚਰ ਲੈਬ ਰਨ ਕਰੇ ਕਰਦੇ स्टोरी पावांगे ना पाना स्टोरी यार क्या मैं पहले ना अपनी थोड़ी वीडियो चेक कर रहा है एक मिनट रोके टोर्चर लैब ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਿਆ ਟੋਰਚਰ ਲੈਬ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕੋ मतलब ना एक एडम चेक करनी है फर्स्ट वाली है फर्स्ट no way to check this लॉस्ट व्यूज ते मेरे बड़े हॉट आए थे यार तो वाह तो चलो कोई नहीं मैं रोके हाँ कंटेंट है तो देखता हूँ नेट ही चलेगा था गल बात ही नहीं होंगी भी यार ये भी नहीं हाँ वो चीज़ें देखना मतलब भी बहुत अच्छा हूँ बनी ना गल है चलिए ठीक है एक वीडियो ठीक होगी यही देखनी है ना चल मैं मेरी वीडियो की दिक्कत से वो देखना चाहता है कि ठीक हुई कि नहीं अच्छा नहीं ठीक हुई हम ते एक्शन लाएंगे और ठीक कराएंगे और फ्राइडे चलूंगा नीचे की प्रोग्राम परमानेंटली करूंगी ठीक है चक्कर ही नहीं रह रहा भाई स्टोरी पा ही रहा और ये नया स्टोरी आज पर यार लिंक भी चकना मैंने पता नहीं कितों लिंक चक्का हूँ वो आई है व्यू कितने लंबा व्यूज है 1000 व्यू आ गए थे मैं क्लिपा बना लगा हूँ पहले मैं सोचा कि ना बनाओ स्ट्रेस ही गया बना लगा हूँ क्लिपा व्यू आ गए यार व्यू व्यू ते चाहिए क्लिपा बना लगा ते हूँ ये बना लगा क्लिपा पाई नहीं हूँ एटलीस्ट नो ये काफी देर हो गया फाइल
व्यूज आइए 1000 व्यू आ गए एंट्री दे व्यू आ गए कुड़ियां दे मुंडे हो नहीं नहीं रील नहीं बनी मैं ऐसा हाँ स्टोरी बनानी ही स्टोरी दे मैं लिंक भी पाना लिंक पहले चुक रहा कॉपी करवा ना चैट में लाइव आ गया यूट्यूब पे जिन्हें भी आना यार कुछ भी देखना हो यार स्ट्रीम देखनी आता है यूट्यूब पे नहीं देख तो ये कहते हो हाउ टू पोस्ट अ लिंक इवन में देखना पड़ा चैट देखना पड़ा हाउ टू पोस्ट अ लिंक देखिए और चैट में लाइव आ गया यूट्यूब पे भी आना यार इधर कुछ भी देख स्ट्रीम देखनी आते है यूट्यूब पे लिंक पे क्लिक करो तो नेट पे भी बोलना चलेगा तो नेट भी तो मारी गया होगा चैट में लाइव आ गया यूट्यूब पे जिन्हें भी आना यार कुछ भी देखना हो स्ट्रीम देखनी आते यूट्यूब पे लिंक पे क्लिक करो ठीक है फोन चैट में लाइव आ गया यूट्यूब पे जितने भी आना यार कुछ भी देखना हो स्ट्रीम देखनी आते यूट्यूब पे गाइस लिंक पे आज क्लिक की इस करो वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपनी इंस्टाग्राम चैट स्टोरी में जो है वो लिंक किस में तरीके लाइव से आ गया ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब उसके पे लिए क्या करना है, जितने भी सिंपली आना प्लस यार आइकन पर क्लिक करना है, स्टोरी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा, इस आइकन पर आपको जो है वो टैप करना है। यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आपको अपनी लिंक को पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो कस्टमाइज स्टिकर आप नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ। उसके बाद डन पर आइकन पर आपको जो है वो टैप करना है। यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कर दो। चैट ग्रुप पे मैं लिंक चेक करना तेरे फर्स्ट टाइम करेगा ना अरे करी लिखा Throw that ass. Throw that ass. New. Check. चलो देख Japan had secret this one. वो शिफ्ट की तरह कैमरा ओ है हमें चैट जापान हैव सीक्रेट्स मैं तेरा सुन रहा चैट जापान हैव सीक्रेट लैब किसी को भी नहीं पता और टॉर्चर कर दे रहे हैं लोगों पे चलो देखते हैं वीडियो ये देखिए देखते हो आवाज कट करा देखते हैं हाँ लाइट नहीं आऊंगी ठीक है
It's a game changer backed by science. Thanks to its US patented enhanced absorption formula, it ensures a remarkable 50% increase in protein absorption compared to other whey proteins, leading to better recovery. Warning: the following content may be disturbing for some viewers, as it sheds light on a rarely discussed dark chapter in Japanese history. Japanese history has been मतलब एक करंट की रनिंग नहीं है पुरानी हिस्ट्री की बात करते हैं ठीक है इन्हें सोचो कि मेरी देखते हैं कितने साल पुरानी है कितने साल पुरानी है इससे आने क्या नहीं Following content may be disturbing for some viewers, as it sheds light on a rarely discussed dark chapter in Japanese history. 1938, a mild summer day in China, on the grounds of 1938 दिया है मूवियाँ somewhere in China 1938 की पुरानी कहानी है secret lab torture lab of Unit 731. Professors, scientists, and military doctors are conducting important research here. Now, the workday is coming to an end. The adults are drinking beer by the pool of the facility. Children are playing tug of war. It's a beautiful sunset. The people next door in the barracks are unaware of this. For them, there is no end to the day, no yesterday, today, or tomorrow. They don't know if it's day or night. They know only one thing: a cruel death awaits. मैं क्या आवाज क्यों रुक के आती हुई है कितने ऑप्शन ऐड किया हूँ स्टेबल voice and a voice why you do that कौन सी खड़ा डबल सी जिन्हें ऑप्शन ऐड किया कि स्टेबल वॉइस थे वॉल्यूम बूस्टर The First World War ended nearly 10 years ago, claiming 17 million lives. Japan fought alongside the Allies. As a result of their victory, Japan's economy is now thriving. The empire, under Emperor Taisho, is a member of the League of Nations. Japan enjoys good international relations, participating in conferences on disarmament and arms control, all in the name of preserving peace. In Geneva, the seat of the League of Nations, Japan signs a historic protocol. The high contracting parties, so far as they are not already parties to treaties prohibiting such use, accept this prohibition. Agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare, and agree to be bound as between themselves according to the terms of this declaration. The prohibition of these weapons is a reaction to an incident in the First World War. For the first time, German troops systematically used poison gas as chemical weapons. The result was so horrific that the 36 founding signers decided such a thing must never happen again. About 9,600 kilometers away from Switzerland, a 33-year-old military doctor about gas as chemical weapons. The result time be bound as between themselves according to the terms of this declaration. The prohibition of these weapons is a reaction to an incident in the First World War. For the first time, German troops systematically used poison gas as chemical weapons. The result was so horrific that the 36 founding signers decided such a thing must never happen again. About 9,600 kilometers away from Switzerland, a 33-year-old military doctor in Japan reads a report on the Geneva Protocol. He is electrified and sees it as confirmation of a theory he has been nurturing for some time. Biological weapons must hold enormous potential if they are so reviled. And he comes to a conclusion. Quite different from that of the signatories in Geneva. If the prospect of germ warfare created such dread, Japan must do everything in its power to create the most virulent germ weapons
as well as effective methods for destroying wartime enemies with lethal diseases. This military doctor, named Ishishiro, will devote his entire life to researching methods of biological warfare. In this endeavor, he will be aided by around 20,000 employees, and an estimated 300,000 people will fall victim to Japan's bioweapons program. 300,000 people, aided by around 20,000 employees, and an estimated 300,000 people will fall victim to Japan's bioweapons program. 300,000 300,000 को छोड़ी बोले हमने 300,000 man with ambition. You just ordered from Myntra. And You just overpaid. Every Myntra. Ishii is regarded as very intelligent, if not even a genius. At the same time, he is described as ruthless, extremely arrogant, and ambitious, someone who would stop at nothing to advance his career. When he pitches his idea to the military leadership, his ultra-nationalistic stance becomes evident. What if enemy states attack us with biological weapons? Then we would be helpless. And we can take advantage of new weapons technology offensively. What if we face a shortage of iron and steel during an economic crisis? We can kill two birds with one stone. Biological warfare. एक मिनट जे एनिमी ने कोई अटैक किया बायोलॉजिकल वेपन ना ते फिर ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਨਿਊ ਵੈਪਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ the phase two I guess what if we have a phase two storage of the iron and steel burning अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ economic crisis ਆ ਸਕਦੇ ਆ we will kill the god with this one stone biological warfare save saves many money and resources while creating an invaluable killing potential. In 1928, Ishii, Pata nahi likely on agle behalf of the year mein army, kya? embarks on a 2-year world tour. He aims to collect research findings on biological warfare. When he returns to Japan in 1930, the political landscape in the country has changed. Under the new emperor Hirohito, ultra-right politicians are in power. Japan's economy has been severely hit by the global economic crisis. In these circumstances, Ishii's ambitions find fertile ground. He wants to create an entirely new institution, the Institute for Epidemic Prevention. Once again, he pitches his idea to the War Ministry, claiming that other countries are secretly developing biological weapons too. That's what he supposedly discovered during his world tour. Now, the War Minister himself becomes interested in Ishii's research. The government provides him with the necessary resources. They revive Japan's chemical warfare unit, a remnant from World War I. In 1932, Ishii's institute begins its work. Ishii and his team experiment with the pathogens for glanders, cholera, typhoid, gas gangrene, anthrax, and plague. Ishii is particularly interested in the latter. To him, the plague is one of the most dangerous potential bacterial weapons. During his travels, he studied the effects of the plague in Europe from the 14th to the 17th century. The institute's name conceals the second part of Ishii's research. There are two types of bacteriological warfare research, A and B. A is assault research, and B is defense research. Vaccine research is of the B type, and this can be done in Japan. However, A type research can be done abroad. The problem with biological weapons is that pathogens don't distinguish between friend and foe. An out-of-control epidemic would endanger millions of people. Research can be done abroad. The problem with biological weapons is that pathogens don't distinguish between friend and foe. An out-of-control epidemic would endanger millions of people in Tokyo. And Ishii is convinced to develop the perfect biological weapon, a bit of lab research is not enough. He wants to test his developments on a large scale, regularly, extensively, on human subjects. The political climate is perfect for Ishii's plans. Japan's new military leaders want to फोन पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ तब ये मैं स्ट्रीम ही बंद करती चैट ना देखते नहीं होता
Japan's new military leaders. You expand. They are more aggressive than their predecessors. Some of them aim to occupy Manchuria. The Chinese region is militarily weak and rich in resources. In 1931, Japan makes a move and actually occupies the region. A year later, they established the puppet state of Manchukuo. The invasion of Manchuria is considered Japan's most decisive early step on the road toward totalitarian fascism and war. In Ishii's eyes, the now Japanese colony is perfect for his work. Potential accidents wouldn't endanger the Japanese population. Vast, sparsely populated areas guarantee secrecy. And then there are the inhabitants themselves, human subjects for his experiments. Ideal conditions for A-type investigations into biological assault. Thus, Ishii requests the relocation of his institute to Manchuria. In order to tell this story in depth, we pored over books, analyzed documents, and created detailed animations, all to make a tough topic such as this one accessible. And if you do build from the ground up by yourself, it's really a fantastic app. Beijing, he builds In Beijing, he builds the world's first bio-war death camp. Zhongma Fortress is a combination of research laboratory and prison camp. It doesn't take much to be sent there by the Japanese colonial power. Soon the prison cells are filled with bandits, guerrilla fighters, partisans, communists, dissidents, and intellectuals. Suspicion that a person might be anti-Japanese minded is enough. They become part of the A-type research, human experiments with biological weapons. How many prisoners were killed is unknown to this day. The average life expectancy of the prisoners is about 1 month. Japan tries to keep the activities at the fortress strictly secret. In Tokyo, the government knows exactly about what's happening in the complex. None of the high-ranking politicians speak out against the killings, or as the scientists there call it, sacrificing human beings. But before Ishii and his team can really get going, the Beijing fortress becomes a security risk. A group of prisoners manages to escape. An ammunition depot is blown up, probably by a group of communist resistance fighters. The project could be exposed. Ishii orders the fortress to be destroyed to cover up any possible traces. He presses the Japanese government. The new site for his research should be even bigger, even more remote. No one should be able to escape. In 1936, Emperor Hirohito personally issues a decree. Ishii's institute is to expand. It becomes part of the Kwantung Army, creating a large network of locations. The headquarters are built in Pingfang. The unit stationed there is given the number 731, a codename that will go down in history. Pingfang is in a remote area, but still near the South Manchurian railway line. The new tracks leading to Pingfang officially don't exist. The secret trains that run there have a single purpose: transporting supplies, human ones included. About 150 buildings are erected over 6 square kilometers. A power plant, administrative offices, prisons, stables, greenhouses, autopsy rooms. There's even an airfield for the unit's air fleet. Trenches line the perimeter of the zone. Electric fences and watchtowers secure the area. The airspace above is a no-fly zone. Ishii runs the headquarters. He's in charge of 3,500 employees. He has recruited many of Japan's best medical researchers. They are all focused on one question: how can plague, cholera, anthrax, and so many more diseases be weaponized for war?
As staff bring in a middle-aged prisoner to a room, he's quiet. He knows it's over for him. He's stripped naked and tied to the bed. But when the medical assistant picks up a scalpel, the prisoner finally starts screaming. I cut him open from his chest to his stomach, and he screamed terribly. His face twisted in agony. The sound was unimaginable. He screamed so horribly. But finally, he stopped. This was just another day for the surgeons, but it really stuck with me because it was my first time. This Chinese prisoner has been deliberately infected with the plague and is now being dissected alive. The researchers want to see how the plague ravages his internal organs. Anesthesia isn't used as it could interfere with the results. Between 1936 and 1945, at least 3,000 people are murdered in experiments like this one, though the actual number is likely much higher. As the Pacific War breaks out and Japan later attacks Pearl Harbor, Unit 731 carries on undeterred. Since the unit is now officially part of the army, they receive new orders. Push the human body to extreme conditions to see how it reacts. You don't have to pay upfront just to get your music on streaming platforms. With Rude Note, distribution is... To study frostbite, prisoners are forced to stand outside barefoot. Specific body parts are submerged in water to freeze them. Prisoners are locked in pressure chambers to test how much pressure the human body can withstand until their eyes pop out of their skulls. Women were forced to become pregnant to study how diseases like syphilis transmit from mother to child and how likely that child is to survive. Even though a large number of babies were born in captivity in Pingfang, most likely none survived. We could go on forever. The list of unspeakable, unimaginable atrocities is so unbearably long. In the labs, there are large 2-meter tanks where human bodies float in formaldehyde, cut in half from head to toe. In other jars, body parts are stored, all neatly labeled and documented. Feet, hands, heads, organs. Next door, the bioweapon production is in full swing. Division 4 of Unit 731 produces 1 ton of cholera bacteria, 500 kilograms of anthrax, and 700 kilograms of typhus bacteria per month. They develop bioweapon bombs and test them in the field. On a test site, prisoners are tied to stakes and bombarded with test weapons. Planes spray parts of occupied zones with bacterial cultures, and bombs filled with infected fleas are dropped on areas. The unit wants to know how many people will die. Troops contaminate wells and water sources with cholera and typhus. At its peak, the unit's bacterial production could wipe out the entire world population multiple times over. After long years of war, World War II is finally drawing to a close. The Allies control most of the Pacific. Japan's major allies, Italy and Germany, have long since surrendered. Japan is the only Axis power still fighting. On August 6 and on August 9, 1945, the US drops atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, pushing Japan towards surrender. Now, something stirs in Pingfang. In a panic, Unit 731 scrambles to destroy all evidence of their crimes. Their research can't be allowed to fall into Soviet hands. They gas the remaining prisoners and shoot the forced laborers. The remains of bodies are thrown into a nearby river. On August 10, 1945, 5 days before Japan's surrender, the unit blows up all its buildings. Infected test animals are released into the wild, causing major epidemics in the region. Around 30,000 people die as a result. Ishii takes the most crucial records with him. He and other senior officials fly back to Japan in comfort. The rest of the staff travels in 15 freight trains, then disappears. They leave behind 2 million biological weapons in Manchuria. Similar scenes play out at other sites of Ishii's institute. Overall, at least 580,000 people die due to Japan's bioweapons research.
Japan's bioweapons. Overall, at least 580,000 people died due to Japan's bioweapons research. Fearing he might be charged as a war criminal, Ishii stages a large fake funeral for himself in 1945 in his hometown of Chiyoda. But the ruse fails. In February 1946, he is found by the US Army. The Americans already know about Japan's bioweapons research center. The Cold War is already looming. They too have experimented with bioweapons during World War II, and they are after the Japanese data. Such information could not be obtained in our own laboratories because of scruples attached to human experimentation. Like the Japanese, they think this data must not fall into Soviet hands. The Japanese bioweapons researchers see an opportunity to escape punishment for their crimes. The meetings and interviews between the US and Ishii's group are well documented. If you grant me immunity for myself, my superiors, and my subordinates, I can give you all the information. In preparing for war with Russia, I offer you the advantage of my 20 years of research and experience. The details of the negotiations remain disputed. What is clear is that the information is deemed by the US to be of such importance to national security as to far outweigh the value accruing from war crimes prosecution. They strike a deal. None of the senior bioweapons researchers, including Ishii, ever faces trial. While Nazi doctors are tried as war criminals at Nuremberg, most of the Japanese involved live out their lives free from prosecution. The Soviet army captures 12 members of Unit 731 and puts them on trial in Khabarovsk in late 1949. They confess to dropping bombs filled with plague-infected fleas on civilians. They speak of inhumane experiments on humans. The West dismisses all of it as a communist show trial. After short prison sentences, they are released. They too use the research data to secure leniency. By 1956, the convicted were free and returned to Japan. Many of the leading bioweapons researchers lived quietly in Japan in the following decades. The war criminals who have dissected living bodies rose to positions of power. The governor of Tokyo, the head of Japan's biggest pharmaceutical company, the president of the Japan Medical Association, and other major offices. There's overwhelming evidence that the Japanese government knew about the atrocities. Yet, it wasn't until August 2002 that the Tokyo District Court finally ruled that Japan had engaged in biological warfare. Its main purpose was to research, develop, and produce biological weapons. In order to do this, prisoners from the Chinese resistance forces were used as the subjects for experiments. But no compensation was awarded. In 2018, the Japanese National Archives released a list of the 3,607 members of Unit 731. Ishii didn't live to see it. He died of throat cancer in 1959. Before his death, he regularly attended reunions of his former unit. Almost every year, former members gather. Some still deny to this day that they ever participated in human experiments. Bad luck had to market is Kanana. How FBI agent KKK ये देखने वाली होगी ना चैट की देख लिया की देख रहा मैं अच्छा मतलब वर्ल्ड वॉर वन मतलब शुरू का होता है ना था कि वर्ल्ड वॉर टू शॉर्ट हुई है ना यूज की थे मतलब 2 मिलियन तो भी ज्यादा बॉम्बे पिछली शॉट है
ठीक है नहीं सर्च में 1.10 Engineered for muscle growth, power, and real recovery. Each scoop delivers 30 grams. Alright, let's get into the reacts then, y'all. Okay, this 50 Cent was right about Floyd Mayweather. Walls are chat जैसा कि हुआ वो 50 Cent was right about Mayweather अब हमें वीडियो देखनी है आप और मेरे बहुत ही थोड़े देख चट आप वीडियो देखनी है 50 Cent was right about Mayweather crazy वीडियो है जो देखने हैं 50 Cent क्या सीन है वाले जो सारा कुछ सच निकले आ The walls are caving in on Floyd Mayweather, and he can no longer do the one thing he has always done to solve his problems: fight. Boxing didn't just make Floyd a Hall of Famer, it also made him filthy rich. He has earned an estimated $1.2 billion over his entire career, but today... of 1.2 billion. That's crazy. Chad, that was a next level, man. Today, he is pawning off his watches to pay off debts, running from multi-million-dollar tax bills from the IRS, bobbing and weaving child support payments, promoting questionable crypto coins, going toe-to-toe with countless lawsuits, and gambling the rest of the cash that he does have. As a result, many are calling him broke. Which is something 50 Cent had been trying to warn us about for well over a decade. Does Floyd Mayweather, is he as rich as we think he is? No. Floyd Money Mayweather's business mogul persona is looking like nothing. 50 Cent पहले ही कहते हैं कि Mayweather is a poor मैं कैसे रहता था थोड़ा बताते हैं ऐसे पर 50 Cent पहले तो ही कहना कैसी Nothing more than a facade. He has desperately tried to convince you that he has made calculated investments alongside a team of business geniuses. I made some very, very smart investments. But there is a very real possibility that Floyd cannot read, which means he likely couldn't understand the deals he was getting into, or he is playing dumb on purpose. And now that he can't fight his way into another multi-million-dollar payday, he is looking like he's going to be the guy who earned generational wealth only to blow it all in one generation. This is how it happened. Floyd Mayweather Sr. was arrested on drug trafficking charges, convicted, and sentenced to 5 years in prison in 1993, which
which is just a small insight into the trauma Floyd experienced as a child. My mother was on drugs. My dad had been shot by my mother brother. I was right there. My dad had grabbed me. Was holding me in his arms when he got shot. My dad had been to prison. And I've been through a lot. Despite his chaotic upbringing, Floyd Jr. was determined to follow in his father's footsteps in the ring. He had a stellar amateur career, but in one of his last amateur fights, he lost in the Atlanta Olympics against the Bulgarian Serafim Torodov. Floyd was not necessarily dominating the fight, but most people watching thought he would be the victor. Even the referee thought he should have won. As the announcer revealed Torodov was the winner, the ref lifted up Floyd's arms, seemingly confused. But while this kind of loss could have derailed other young athletes, Floyd said it only motivated him to become great. The referee raised my hand because he thought I won, but I'm glad that the fight went like it went. Why? Because if it did, it made me work that much harder as a professional not to feel that same pain again. So you believe losing that fight was the greatest thing that ever happened to Floyd Mayweather Jr.? That was one of the best things that happened to me. One of the best things. This setback was the perfect marketing storyline for his first official pro match against Roberto Apodaca. Promoters were building Floyd up as the young prodigy who got robbed at the Olympics, working as hard as he could to support his dad when he got out of prison. And by all accounts, Floyd delivered. He took Roberto down in round 2 with an Sad story the dad prison चाहते हो, try to get back his family, मतलब अपनी family ने सही करना चाहा. See. incredibly precise shot to the kidney, but the most impressive part for new fans was that he was basically untouchable due to near-perfect defense. However, becoming a professional fighter didn't immediately make him rich and famous. Floyd only made $2,500 in his debut fight. He had just signed to Top Rank, a fighting promotion ran by the legendary Bob Arum. Bob's job was to turn fighters into stars. Top Rank put up the money to create Floyd's fights, negotiate television deals, find opponents, and slowly build his reputation. In return, they had the exclusive right to promote his fights and take a massive percentage of the money each event generated. All Floyd had to do was win, and he did. He earned the nickname Pretty Boy Floyd due to his remarkable speed and defense. His opponents barely ever hit him in the face, so he never really had any cuts or bruises. His nice guy look while being a savage knockout artist got fans invested in him, and at this point in his career, he was much more humble, soft-spoken, and generally more passionate and emotionally invested in his fights. But as Floyd kept winning, he realized something strange. Everyone around him was making way more money than he was. I took it upon myself to learn the business part of boxing. Why let a promoter keep majority of the money? He's not out there competing. Mayweather desperately needed to renegotiate his business affairs. The problem was, making money in the ring and making money outside of it are two very different skills, and Floyd wasn't exactly prepared to be the big boss he thought he was. But real quick, I want to tell you about the sponsor of today's video, Simply Safe. Let's take a look at it in action. We got a sketch character scoping out the back door here. Or the side door. Uninvited. Get him out of here! You just saw Simply Safe's Active Guard. Their AI guard before broken in. No wires or sensors to stick to the walls. The whole process takes about 30 minutes. Simply Safe takes your privacy seriously. The camera Simply Safe has. If you want security system, click the link. Floyd Jr. had a perfect 33-0 record after beating the absolute brakes off Arturo Gatti. Despite this, Gatti was still considered the bigger draw and actually earned more money than Floyd. Now, $3.2 million was still an amazing payday for most boxers' standards, but he felt like he was getting less than he deserved. Mayweather had just purchased his first mansion in the Las Vegas Mountain Trails neighborhood for $3 million and needed to bring in multiple millions to sustain the lifestyle he wanted. Him and Bob Arum started disagreeing on Floyd's payouts, also referred to in boxing as the purse. Floyd felt that it was his work in the ring that got him the sold-out arenas, whereas Bob felt that the financial risk he took on Floyd for the past 10 years, building him up from a nobody to a superstar, is what gave him the authority to choose what Floyd should get paid. This is exactly the same type of situation when an artist is 4 albums deep into their recording contract and all of a sudden they say the label is evil and that they're taking too large of a percentage and that they should be allowed to
to be independent now. But when the label was spending millions of dollars promoting this artist when nobody knew them, everything was fine. Floyd was able to slowly get larger purses, receiving $4.3 million against Sharmba Mitchell, then $5 million against Zab Judah, but the breaking point came when Bob wanted Floyd to fight Antonio Margarito. Floyd demanded an $8 million purse, but Bob refused. He didn't believe the fight could generate enough money to justify paying Floyd that much. Betting on himself, Floyd paid roughly $750,000 to buy himself out of his contract with Top Rank. He walked away from the man who built his career and started his own company called Mayweather Promotions. I think the best move that I ever made was leaving Top Rank. I was making, 7 figures with them, but once I left them, I made 8 figures. That was the best move I ever made in my whole career, was becoming my own boss. It was the biggest gamble of his life. Instead of relying on somebody else, Floyd would now be 100% responsible for negotiating all of his business affairs. But this appeared to pay off almost immediately. His very next fight against Carlos Baldomir earned him the exact $8 million purse he had been asking Bob Arum for. To Floyd, it looked like he had just proven everyone wrong, and he followed that up by stepping up to the biggest challenge of his life, fighting the legendary Oscar. ये क्यों गया वो नहीं की पता गैम्बलिंग कर रहा पे वो पे तांगल का बाहर है यो भी Oscar de la Hoya. Oscar was universally loved, called the Golden Boy with his nice guy personality. But Mayweather Jr. had a very similar image, and if he was going to sell this match, he would have to become the villain of American boxing. Look me in the eye right now, Oscar. Look me. The worst part isn't losing money. It's realizing you trusted the deal. Me in my eye. I'm gonna beat you. I'm the top drawer. You remember that? Can't be too good, guys. I chose to be the bad guy. I'm gonna beat you till you respect me. I'm gonna beat you. I'm gonna make you call me pretty. I'm gonna beat you like that. I'm still gonna beat this. Making a toast to me kicking Oscar ass. Here we are in the biggest fight of our lives. And you have the pound for pound champion of the world acting like out of his mind. He couldn't control himself. I'm going to make it a rough and tough fight come May 5th. I'm not going to run. I'm so scared. Hi, my name is Oscar de la Hoya. I'm going to do this. You ain't going to do shit. HBO's 24/7 gave fans a closer look at Mayweather's personality. One boxing journalist wrote, "He was loud, he was obnoxious, he was arrogant, and he had no problem painting himself as the villain. He read the landscape and figured he could make money as the bad guy. If everyone wouldn't pay to see him win, maybe he could get some people to pay to see him win and others to pay in hopes that he would get his big mouth shut for once." Floyd's promotional efforts paid off big time, achieving 2.4 million pay-per-view buys, making it the highest grossing non-heavyweight pay-per-view event ever. Mayweather walked up to the ring wearing a sombrero and a bedazzled Mexican flag to taunt Mexican fans rooting for De La Hoya. But when they entered the ring, it was clear that Mayweather was going to have to pull out every defensive tool he had in his arsenal. De La Hoya had a deadly focus, and all of Floyd's mental tricks seemed to be meaningless as he continued to find himself backed into a corner. It was the toughest match that either of them had ever fought, and Floyd barely came out on top with a technical victory. Mayweather ended up winning by split decision, securing him the WBC welterweight championship title and keeping his perfect unbeaten record. Floyd Mayweather Jr. had officially reached the top of the mountain in boxing, and this fight earned him a staggering $25 million. He had nothing left to prove, and at the end of the fight, he announced his retirement from the sport. This was the official end of Pretty Boy Floyd and the beginning of Floyd Money Mayweather, touting himself as a CEO and business tycoon. Well, it turns out that Floyd's retirement was just a way to avoid him fighting Oscar de la Hoya again. Oscar put a rematch clause in their contract, meaning Floyd legally had to run it back, but Floyd officially retired for 1 year and 1 day so he could fight someone else. Probably his one and only genius business move. In his next bout, Floyd knocked out Ricky Hatton in the 10th round in a match that earned him another $25 million. He was now in a position where he felt completely dominant over all his potential opponents, and now his only motivation to fight was based on how much money he could extract from the deal. Because I gave the sport my whole life, so I really don't, as of right now, I'm really bored with the sport of boxing. With the De La Hoya fight, I really didn't want to come back to the sport. But then I told you, if I do business with Oscar and they give me a price that I can't resist,
he gonna get me back in there. And they gave me a price I couldn't resist, so I had to get in there. Trainer Roger Mayweather thinks it will be hard to walk away from another huge payday. Bill Gates still making computers, ain't he? So you know what that means. If a man can make that kind of money in one night, where else you gonna get it? Instead of fighting, Money Mayweather was now flaunting stacks of cash and purchasing luxury cars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's $1 million right there. It's evident Floyd knew how to count, but didn't really know how to save for the IRS. Mayweather paid $15.5 million in taxes for 2001 and 2003 through 2007, only after the IRS filed liens against him. And coughing up that amount of cash is not easy, even for someone like Floyd, which is why some suspected he might only be coming back to boxing for a payday. You're a man of many things, but you're a master of nothing. I seem to be occupying my job, though. As you often say, you're just a guy with a job. I have a job, though. So who would you fight next? Guess what? Your job don't pay like my job. Well, it depends. Your job don't pay like my job. That brings me to another point. Job is no pay like my job. Crazy. Why are you coming back? I can make $200 million in 18 months because I want to. Because I want to come back and steal some more money. Is that okay with you? It's fine. Okay, I enjoy watching your fights. Okay. Who might be next? It doesn't matter. All right. How about Manny Pacquiao? If he wanted, he can get it. Mayweather's next bout was against Juan Manuel Marquez, and the IRS sent Nevada boxing regulators a levy notice in 2009 ordering that $5.6 million in unpaid taxes will be deducted from Mayweather's $10 million purse, to which Mayweather agreed to, but this was nowhere near the end of his tax troubles. The IRS had Floyd Mayweather Jr. on the hook for $7.2 million in taxes from 2010, according to tax records that show a lien as unresolved for the year he fought Shane Mosley. In that fight from 2010, Floyd won a staggering $40 million. It was these kinds of paydays that allowed Floyd to keep flaunting larger and larger stacks of cash and wearing expensive watches, all while his debts to the government were constantly creeping up behind him. However, Mayweather's tax attorney Jeffrey Morse told the Associated Press that the 2010 lien was no longer valid. There is no tax obligation outstanding for the 2010 tax year, Morse wrote, even though county court records still showed the matter as unresolved. Morse later told FightHype.com that Floyd's a savvy investor, and if he's investing money and getting a rate of return that far exceeds what he has to pay the IRS in interest, then any smart business person is going to take advantage of that deferral. Basically, they're trying to suggest that since the IRS charges a 7% interest rate on money owed, that Floyd was investing his money into things that were getting him more than a 7% return to essentially profit off not paying his taxes, and then just simply waiting until they essentially bang down his door to get the money from him. And although there are much better ways to increase business expenses and take some calculated losses to offset tax liabilities, it's not impossible that this is his strategy. But Floyd has never remotely given any insight to convince anyone that he is a savvy businessman. He defaults to just saying he makes investments. I made some very, very smart investments. What have you been doing since you've been retiring other than hanging out with your kids? Are you doing any work outside your foundation? Oh, just smart investments. Very, very smart investments. But when you look at Floyd's very public spending habits into luxury cars, overpriced jewelry, private flights, it's hard to tell if avoiding taxes was a calculated investment strategy or simply someone who didn't want to write a... My sister, she's the best at giving gifts. But this time, I'm gonna get her the perfect gift that's gonna light up her Raksha Bandhan. After all, the Roshans love Roshan. The delicious hazelnut taste. Truly the best gift of all. This Raksha Bandhan will light up your bond with your siblings with Ferrero Rocher. very large check to the IRS. However, none of us would have really known about Floyd's money troubles if it weren't for his complicated friendship with 50 Cent, because after Floyd refused to pay 50, he didn't hold back from exposing the Money Mayweather facade. In 2011, the friendship between Mayweather Jr. and 50 Cent started to become more of an official business partnership when Floyd announced a new film company called Mayweather Productions using the infrastructure from 50 Cent's Cheetah Vision Films. The first movie was going to be an
an action film titled Tomorrow Today. 50 Cent was set to write and direct it, and shooting was planned for August 2011 in Grand Rapids, Michigan. It came alongside a reported $200 million investment deal for Cheetah Vision to produce and release 10 movies distributed by Lionsgate. All of a sudden, they were constantly seen side by side in commercials, magazine covers, and formed TMT, which is an acronym for The Money Team. It seems like a fair assumption that 50 Cent had access to the entertainment industry, which Floyd presumably wanted to make money in, and then Floyd had access to the boxing industry that 50 Cent presumably wanted to invest in. Floyd said, "As far as boxing, I think 50 is going to be involved with the promotion side. We might even have him fight on pay-per-view one time. We don't know what the future holds, but he is getting involved with boxing." Unfortunately, when Floyd was getting in trouble with the law, their partnership started to crumble. You see, Floyd had a bit of a history of violence outside of the ring. He was convicted in 2002 of misdemeanor battery stemming from a fight with 2 women at a Las Vegas nightclub. He received a suspended 1-year jail sentence and was ordered to undergo impulse control counseling. He was fined in Grand Rapids in February 2005 and ordered to perform community service after pleading no contest to misdemeanor assault and battery for a bar fight. He was acquitted by a Nevada jury in July 2005 after being accused of hitting and kicking his ex-girlfriend Josie Harris during an argument outside a Las Vegas nightclub. And a boxer having a short fuse is no surprise to most. I mean, how could we forget his legendary crash out against 80-year-old Larry Merchant? You were aggressive and trying and taking advantage of what you saw as a flaw. You know what I'm gonna do? Because you don't ever give me a face shake. You know that? So I'm gonna go and let you talk to Victor Ortiz, all right? I'm through. They put somebody else up and give me an interview. What are you talking about? What are you talking about? You never give me a fair shake. HBO need to fire you. You don't know about boxing. You ain't you got I wish I was 50 years younger and I'd kick your ass. Don't do and do nothing. But this temper becomes particularly problematic when he puts his hands on the mother of his children, especially in front of them. When facing domestic violence charges again in 2010, he knew the odds were stacked against him. He admitted to hitting his now ex, Josie Harris, and twisting her arm, and decided to take a plea deal, receiving a guilty verdict and spending 90 days in jail. Initially, 50 and Floyd continued like it was business as usual, hyping up fans regarding a possible fight with boxing legend Manny Pacquiao. 50 even started trolling by tweeting, "Pac Manny ducking cause he know he gonna get his ass handed to him. I told Floyd beat his before he go to jail," holding stacks of money to show the money team was still locked in. 50 Cent was even there to pick up Floyd from jail with the rest of the Mayweather family after his sentence was up in the summer of 2012. But when Floyd got out, everything changed. 50 said, "Everybody around him is waiting on the next time he feels generous, and I have a lot, so I don't wait for nobody. It's just a space and time. I'll go and do what I have to do. I don't gotta sit around and wait for the next time he feels like giving somebody something." From there, 50 would reveal Floyd's extreme lack of business acumen as the reason why they had a falling out. Now, what do you mean he changed his mind? Like, as he was actually going into jail, he asked me to help him with Mayweather promotion. Right. Then as he actually got in, भाई सही में 50 सेंट है सबको होगा सही दासा भाई 40 मिनट की वीडियो देखते हैं क्या कहता है. Took a look. I realized there is no Mayweather Promotions. There's no LLC. There's no seal. It's not incorporated. No, it's just a name. Yeah, that comes out people's mouth. Technically, Floyd is a Golden Boy fighter. Fights on every Golden Boy card. They do all the footwork on like every the negotiations and the imprint, the paperwork. They built the whole show. When he says helping with Mayweather Promotions and it's not there, I go, okay, I know what he means. He wants me to get it together. Put it together for him. So I do TMT promotions. I get it all the way together. Sign the actual fighters. I brought him over while Floyd was still incarcerated. Then he comes home. There's the Let's Get Floyd Back in Pocket campaign that goes on where, it's $300,000 chains being bought and buying the new Lamborghini and all these new things. And I'm sitting there going, yo, when you gonna give me the money? Because you'd already invested. Right, like when you gonna give me your half of the money back. But I ain't trying to press him because he just got out of jail. Now, either 50 was being misleading on purpose, or he just kind of mixed up his words. He said Mayweather Promotions wasn't incorporated, which is just false. Public records and court filings from many years earlier already reference Mayweather Promotions LLC, meaning the company did exist. What he could have meant was that Mayweather Promotions wasn't properly licensed as a promoter in Nevada, and that Floyd was essentially a Golden Boy Promotions fighter, which does seem to check out, because Golden Boy was the licensed promoter for
all of Floyd's fights from 2007 to 2014. Mayweather Promotions was listed as the co-promoter. Now, I think it's a safe assumption that Golden Boy was the company that was working with the Athletic Commission, securing the venue, arranging insurance, coordinating production, negotiating television and pay-per-view distribution, handling sponsorships, overseeing ticket sales, and making sure that the event actually happened. Floyd, on the other hand, most likely was just a fighter, just like he had always been his entire career. And sure, he is technically independent and negotiating his pay on his own behalf, but the Mayweather Promotions being on the flyer makes it look like he was running this boxing empire. And that context matters when we talk about the formation of the Money Team, which was supposed to be a joint venture boxing promotion between 50 and Floyd. It is true that while Floyd was locked up, the Money Team had not been legally incorporated, and 50 Cent went through the process of setting up the legal entity. 50 even went further and started signing fighters to the promotion and wanted to start the process of setting up fights. But then Floyd would. What are you doing? Be mine forever? Yes. Crunchy almond in creamy filling with fragrant coconut flakes. Even when you're not listening, life is calling your name out. Say hello with Ruffello. Wouldn't put up his half of the money that was invested, and then went on to tell 50 that he basically never asked him to do this joint venture in the first place. When is he gonna say he wants to, to give me the other half of it? Why I gotta ask you for it? And then when Are we talking over $2 million? It's about that. Okay. At that point, it was, invested in. right. So look, he goes, when he finally does bring up the situation, he acted like he didn't know anything. Like, I didn't tell y'all to do that. I didn't tell you to do that. And I'm looking at him, and he looked at my face and he didn't tell me to do that. Now the big question is, why wouldn't Floyd want to go into business with 50? Like, where was the misunderstanding? 50 basically says he's nothing more than a fighter, and that he doesn't know all of the complicated and detailed steps of what it actually takes to put on a pay-per-view event. But he takes it a step further and says Floyd doesn't do anything without the assistance of others. He doesn't even tweet. That's not Floyd. Floyd don't tweet. Wow. That's not him on Instagram. He got somebody next to him. See, everybody around him is codependent. So they're going to roll with what he says regardless. But do he tell them type this? He got to tell them to type this, though. Like, they'll tell him what to say. Like, as soon as you get confused, he's going to go, okay, fine. Just call out. Right. It gets confusing. And then he just goes, just call out. Now, finding out a professional boxer pays people to do literally everything for him is not surprising. The problem is that Floyd parades himself as a smart investor and savvy businessman, when in reality, 50 revealed that he just fights, spends all his money, then fights again to make the money back he just spent. Him making the decision to not put up his half of the actual money is fine. It's kind of trapped in a regimen of fight, get the money, spend the money, fight. Fight, get the money, spend the money, fight. There's no investments, no income from anywhere outside of him fighting. I look forward to having him be involved in situations where he can continuously have income so he doesn't run into what so often fighters run into at the end of the career, not having any financial support or money around. After cutting ties with Floyd, 50 Cent repeatedly hinted that he was doing business with Manny Pacquiao and even suggested that the two would work together, but no formal partnership ever emerged. So 50 resorted to doing what he does best, trolling. A perfect example is when Floyd went out of his way to touch T.I.'s wife Tiny at a red carpet event, and 50 Cent made a video pretending to call Mayweather and tell him to chill out because T.I. might get violent. Chat, what the f is going on, man? Niggas tell me you down there at the Fatburger fighting over time. Now that's T.I., man. You gonna cause these niggas to buy more guns in Atlanta. Floyd responded to 50 in an interview where he said, "God has blessed me with an unbelievable talent, with fast feet, fast hands, unbelievable defense, and a very, very sharp mind. So I'm thankful for that. Of course, hip-hop artists, they come and go. They come and go, but I'm still here." A lot of these rap artists rap about certain things, but I really live it. Like, every home that I have is paid for. Every car that I have is paid for. And I am a $100 million man. I mean, this is the truth. It's not a lie. I mean, if these guys claim that they're doing certain numbers and... Oh, that's why Indian boxing is failing. They're not a single... certain units... Oh, we can feel that. I can feel that. भाई क्या वो दे दिया है प्रमोशन का वो में मुझे इन्होंने क्या आइडिया दे दिया है भाई
We'll see. My fight is already sold out. 50 woke up the next day and responded to Floyd's comments with one of his most iconic videos ever. Woke up, I look at the computer say, Floyd said, T.I. Nelly 50. Guys claim that they doing, live it. Like, you know, every home that I have is paid for. Every car that I have is paid for. And I am $100 million man. I mean, this is the truth. It's not a lie. I mean, if these guys claim that they doing certain numbers and certain units, we'll see. My fight is already sold out. 50 woke up the next day and responded to Floyd's comments with one of his most iconic videos ever. Woke up, I look at the computer say, Floyd said, T.I. Nelly 50. I'm like, what do you say me for? Nelly your first baby mama, Melissa, then took your fiance. Say that nigga. The internet exploded, and Fifth wanted to keep the laughs coming, so in honor of the ALS Ice Bucket Challenge trend, he decided to challenge Floyd. This is a special ASLELS challenge for you, Floyd. If you can read one full page of a Harry Potter book, nigga, I'll give $750,000 to whatever charitable organization you want to. The bucket of ice, man. Fifth sensed that Floyd might not be able to read the Harry Potter book, so he made some changes to his challenge. I had a phone call from my man Jimmy Kimmel. Jimmy said if Floyd accepts the challenge, then he'll put it on the actual show, so you can read it on the show. We don't want to put pressure on you. We know you can't pronounce those words in that Harry Potter book, so we're going On Domino's checkout. Coupon expired. Invalid coupon. Don't let you read that in the hat. Sadly, Floyd never accepted the challenge. He only responded with a picture of some multi-million-dollar checks saying, "Read this $72 million." Over the years, 50 Cent continuously mocked Floyd's reading capabilities and intellect, writing out hilarious messages pretending to be Floyd, and 50's trolling was so devastating that to this day, people still make fun of उड़ाते हैं कि उसे पढ़ना नहीं आता और भले ही फ्लॉयड के जीवन और व्यावसायिक बुद्धि के बारे में 50 की बातें सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं, लेकिन आज मेवेदर की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए लगता है कि 50 सेंट शुरू से ही सही थे। फ्लॉयड ने एक और बड़ी मनी फाइट की जिसमें मार्कोस मेडाना के खिलाफ रीमैच के लिए $3.2 करोड़ की कमाई सुनिश्चित की, और उसी दौरान इंस्टाग्राम काफी लोकप्रिय हो रहा था, जो फ्लॉयड के लिए अपनी दौलत दिखाने का सही मंच था। वो वर्कआउट करते हुए अपने वीडियो डालता जबकि उसके पैसे पर पलने वाले लोग जिम में घूमते और फोन चलाते रहते। वो कम गुणवत्ता वाले वीडियो डालता जिसमें वो अपनी उन घड़ियों को दिखाता जिन पर लगे हीरे जवाहरात से एक छोटा इलाका खरीदा जा सकता था। वो फेरारी, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी अपनी विशाल लग्जरी कारों का कलेक्शन दिखाता, और 2014 में उसका कलेक्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया जब उसने $5 करोड़ से अधिक का गल्फस्ट्रीम G650 खरीदा, जिसे एयर मेवेदर नाम दिया गया, जिसे मनी टीम के लोगों के साथ पूरी तरह कस्टमाइज किया गया था। 2015 में मैनी पैकियाओ के साथ अपनी अगली सुपर फाइट से पहले वो लास वेगास में अपने कस्टमाइज्ड घर को दिखाने के लिए उत्सुक थे, जिसे उन्होंने लगभग $1 करोड़ में बिग बॉय मैंशन का नाम दिया था। फ्लॉयड ने ESPN के स्टीफन एब्राहम को MTV क्लिप स्टाइल टूर के लिए बुलाया ताकि वे खुद को अमेरिका के सबसे महान उद्यमियों में से एक के रूप में पेश कर सकें। लगभग 20,000 वर्ग फुट से थोड़ा अधिक, 3 या 4 स्तर। मनी मेवेदर, ये उचित लगता है कि आप वेगास में रह रहे हैं। मेरी मानसिकता हमेशा कड़ी मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने की रही है।
फ्लॉयड का अपने बिग बॉय मेंशन का टूर वास्तव में स्वाभाविक या बिना तैयारी का नहीं लग रहा था। ये बहुत रिहर्सल किया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने साक्षात्कार में जो कुछ भी कहा उसका अभ्यास किया हो। खासकर अंत में जब उन्होंने अपने घर के बाहर लकड़ी काटने वाला स्टेशन दिखाया। वहीं वापस जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लकड़ी काटना? हाँ, लकड़ी काटना। लकड़ी काटने का भी एक तरीका होता है। कैसा है? मैनी पैकियाओ के साथ उनके आगामी मैच के इर्द गिर्द का प्रचार किसी तरह डीला होया से भी बड़ा था। 57 जीत, 5 हार, 2 ड्रॉ और 38 नॉकआउट के साथ मैनी एक दिग्गज प्रतिद्वंदी थे। हालांकि फ्लॉयड चिंतित थे कि मैनी को हराने से जो हाल ही में चोटों से जूझ रहे थे और अपने बेहतरीन दौर से काफी आगे निकल चुके थे, उनकी विरासत को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ कुछ भी हो जाए मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर मैं मैनी पैकियाओ को हराता हूँ तो जानते हैं वे क्या कहेंगे? तुम्हें तो तुम फ्लॉयड, मैं वेदर हो, तुम बड़े खिलाड़ी हो। तो वे अगर मैं से आउटबॉक्स करता हूँ तो वे कहेंगे कि एक बड़ा। और ईमानदारी से कहूं तो फ्लॉयड यहाँ गलत नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि उन्हें पैकियाओ से लगभग 7 साल पहले लड़ना चाहिए था। अंततः फ्लॉयड ने जीत हासिल की और अपने 48-0 के परफेक्ट रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए एक और बड़ी जीत सुरक्षित की। ये वास्तव में सदी की लड़ाई थी जिसमें मैनी की आक्रामक शक्ति और फ्लॉयड का दिग्गज बचाव देखने को मिला, जिसके लिए वह मशहूर थे। लेकिन पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सभी को याद दिलाना पड़ा कि उन्होंने अपना पैसा कितनी अच्छी तरह निवेश किया है। मैं 40 साल की उम्र तक इंतजार नहीं करना चाहता कि मेरे शरीर पर बुरा असर पड़ना शुरू हो। आप जानते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी बरकरार रहें। मैंने अपना पैसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से निवेश किया है। मैं आज मुक्केबाजी छोड़ सकता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहली बार में भाग्यशाली हूँ और मैनी भी भाग्यशाली है, वो एक ज़बरदस्त फाइट है। इस लड़ाई से हुई कमाई ने स्पष्ट रूप से इसे इंतजार के लायक बना दिया, क्योंकि मैवेदर जूनियर की कमाई $18 करोड़ थी और कुल मिलाकर उन्होंने लगभग $25 करोड़ कमाए। इस समय तक फ्लॉयड अपने बॉक्सिंग करियर से $420 मिलियन से अधिक कमा चुके थे। हालांकि 2015 उनके सबसे बड़े वित्तीय वर्षों में से एक रहा, जिसमें मैवेदर ने लगभग $300 मिलियन कमाए और फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में पहले नंबर पर रहे। और फिर भी इतना पैसा होने के बावजूद वो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे थे। ज्वेलर्स इंक ने मैवेदर जूनियर के खिलाफ मुकदमा दायर किया, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर सितंबर 2015 में $3 मिलियन का हार खरीदा था, जो 72 3 कैरेट राउंड कट हीरो से बना था। ज्वेलर ने दावा किया कि उन्होंने $1 मिलियन अग्रिम भुगतान किया और बाद में 6 अतिरिक्त $100,000 के भुगतान किए, लेकिन मई 2016 के बाद भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे $100 मिलियन का बकाया रह गया, जिससे वो 1.5 रह गया। तो या तो वो जानबूझकर ज्वेलर्स को ठग रहे थे या वो इसका खर्च नहीं उठा सकते थे। लेकिन ये देखते हुए कि फ्लॉयड ने अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए एक दूसरा छोटा विमान खरीदा ताकि वे जहां भी जाएं उनका अनुसरण कर सकें, ये संभावना है कि उनके पास पैसा था, बस वो भुगतान नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये सिर्फ ज्वेलर्स की बात नहीं थी, आईआरएस को भी कुछ भुगतान नहीं मिल रहे थे। ईएसपी ने रिपोर्ट दी कि एक संघीय टैक्स लीन से पता चला है कि फ्लॉयड पे 2015 के टैक्स का $22.2 मिलियन बकाया था। इससे भी अधिक संदिग्ध बात यह है कि मैवेदर ने आईआरएस को समय के साथ भुगतान करने देने के लिए राजी करने की कोशिश की, और जब वो काम नहीं आया तो वो अधिक समय मांगने के लिए अमेरिकी टैक्स कोर्ट गए। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति नकद के रूप में उपलब्ध नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उनके पास हवेली, कारें, घड़ियां, निवेश और अन्य मूल्यवान संपत्ति हो सकती है, लेकिन उस समय बिल चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं थी। द गार्जियन ने रिपोर्ट की कि मैवेदर की याचिका में कहा गया है कि उनके पास बिल चुकाने के लिए एक बड़ा लिक्विडिटी इवेंट आ रहा है, जिसका अर्थ है कि वो कॉनर मैग्रेगर के साथ आगामी लड़ाई का उपयोग अपने टैक्स चुकाने के लिए करने वाले थे और बिल चुकाने के लिए बड़ी लड़ाइयों का उपयोग करने का ये चक्र वही है जिसका 50 सेंट ने उन पे सालों पहले आरोप लगाया था। शून्य से शुरुआत की, अब मैं यहाँ हूँ। तुम 40 साल के हो, अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनो। स्टेज पे स्कूल बैग लेके घूम रहे हो। स्टेज पे स्कूल बैग लेके तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ भी नहीं सकते। शुरुआत से ही असली फाइट फैंस ने मैग्रेगर बनाम मैवेदर मुकाबले को दोनों फाइटर्स के लिए एक स्पष्ट कैश ग्रैब के रूप में देखा। फ्लॉयड एक सेवानिवृत्त 40 वर्षीय बॉक्सर थे और कॉनर बॉक्सर नहीं थे, और कॉनर बॉक्सर ने इसकी तैयारी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के इतिहास के सबसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए और अराजक प्रमोशनल टूर में से एक थी, जिसमें 4 अलग अलग बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, जहां दोनों ने लंबे भाषण दिए और एक दूसरे के सामने खड़े होकर नफरत करने का नाटक किया। ये हल्का मनोरंजक था, लेकिन अधिकतर अजीब और थकाऊ था। माइक्रोवेव मील, तुम बस वही हो, मैं घर की बनी खाने जैसा। उस सस्ते वॉलमार्ट सूट के साथ अपना स्तर सुधारो। 1.4 मिलियन। कॉनर के पास अंत में कोई मौका नहीं था और वो 10वें दौर में टीकेओ के जरिए हार गया। ये इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला पेपर व्यू था, जिसके 4.3 मिलियन खरीदार थे और जिसने $600 मिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित किया। नेवादा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने घोषणा की कि मैवेदर ने कथित तौर पर लड़ाई से कुल लगभग $300 मिलियन कमाए। यह फ्लॉयड मैवेदर का आखिरी पेशेवर मुकाबला था और भविष्य में करोड़ों डॉलर की गारंटीड कमाई न होने के कारण उन्हें अपने खर्चों को नियंत्रित करने या पैसे कमाने के अन्य तरीके खोजने की आवश्यकता थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फ्लॉयड के पास हमेशा कुछ बड़े निवेश होते हैं जिन पे वो काम कर रहे होते हैं। मेरा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो अद्भुत है, लेकिन बेशक मेरा एक स्ट्रिप क्लब। हर कोई पूछता है, अच्छा तुम एक स्ट्रिप में क्यों शामिल हुए? आप जानते हैं, भले ही मुझे मेरे रियल एस्टेट और स्ट्रिप क्लब से अभी भी लाखों मिल रहे हैं, मैंने इस तरह देखा। मैंने कहा एक नाइट क्लब, ठीक है, वहाँ शराब है, संगीत है, लेकिन आपको अब मैंने अपना मन बना लिया है। क्लब को बदलते रहना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि स्ट्रिपर्स और लड़कियां कभी चलन से बाहर नहीं होंगे। हालांकि इनमें से एक निवेश एक वैध धोखाधड़ी निकला। फ्लॉयड क्रिप्टो करेंसी के दीवानेपन में सिर के बल कूद पड़े। उन्होंने सेंट्राटेक नामक एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओ को बढ़ावा दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सेंट्रा का आईसीओ कुछ घंटों में शुरू हो रहा है। सेंट्रा उनके बिक जाने से पहले अपना ले ले, मैंने अपना ले लिया है। कुछ महीनों बाद एसईसी ने आरोप लगाया कि सेंट्रा के संस्थापकों ने निवेशकों से लाखों जुटाने के लिए वीजा और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी वित्तीय कंपनियों के साथ व्यावसायिक संबंधों का झूठा दावा किया था। संस्थापकों पर अंततः धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। अब फ्लॉयड के प्रति निष्पक्ष रहने के लिए उन पर योजना बनाने में मदद करने का आरोप नहीं लगाया गया था और आईसीओ उछाल के दौरान अनगिनत हस्तियां और प्रभावशाली लोग उन क्रिप्टो परियोजनाओं का समर्थन कर रहे थे जो बाद में ढह गईं। लेकिन फिर से, यदि आप खुद को एक वित्तीय प्रतिभा और खेल के सबसे चतुर व्यापारियों में से एक के रूप में ब्रांड कर रहे हैं, तो आप जनता से लाखों डॉलर मांगने वाली निवेश कंपनी से अपना नाम जोड़ने से पहले थोड़ी अधिक जांच की उम्मीद करेंगे।
उन्हें घोटाले को बढ़ावा देने के लिए ऐसी जुर्माना के तौर पर $100,000 का भुगतान करना पड़ा, लेकिन ये चैंपियन के लिए कुछ भी नहीं है जिसने 260 कैरेट के पन्ने के आकार की हीरो वाली जैकब एंड कंपनी की घड़ी के लिए 18 मिलियन का भुगतान किया। क्योंकि इसका मूल्य बढ़ता है, इसका मूल्य बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन उनकी क्रिप्टो योजनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी और इस बार वो सीधे हमारे मुंह पर हंस रहे थे। 2020 के अंत में सबसे अप्रत्याशित और पागल कर देने वाली खबर की घोषणा की गई थी। फ्लॉयड मेवेदर जूनियर एक बॉक्सिंग प्रदर्शनी में यूट्यूबर लोगान पॉल से लड़ने वाले थे। अपने भाई जेक पॉल द्वारा यूट्यूबर बॉक्सिंग को एक वैश्विक तमाशा बनाने की सफलता का फायदा उठाते हुए लोगान ने किसी तरह सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक के साथ डील कर ली, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉयड के पक्ष में थी। खबरों के अनुसार फ्लॉयड ने $1 करोड़ की गारंटी और पेपर व्यू मुनाफे का 50% हासिल किया। उन्होंने विज्ञापन से $3 करोड़ और कमाए, जिसमें एथेरियम मैक्स या ईमैक्स शामिल था। इस सिक्के का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन 2021 की गर्मियों में फ्लॉयड और किम कार्दाशियन तक ने इसका प्रचार किया। मेवेदर जूनियर ने इवेंट से पहले और इवेंट के दौरान अपने कपड़ों पर ईमैक्स का लोगो लगाया। उन्होंने 2021 के बिटकॉइन सम्मेलन में ये तक कहने की कोशिश की कि ये बिटकॉइन से भी बड़ा होगा और भीड़ ने उन्हें जमकर बू किया। मेरा मानना है कि आप जानते हैं एक और क्रिप्टो करेंसी होगी जो किसी दिन बिटकॉइन जितनी ही बड़ी हो जाएगी। वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ है नहीं। उबर और लिफ्ट में कोई अंतर नहीं है। हैरानी की बात नहीं है कि मेवेदर जिस सिक्के का प्रचार कर रहे थे वो लॉन्च होने के तुरंत बाद शून्य हो गया और आज आप उसे खरीद भी नहीं सकते। वो बाद में फ्लॉयड को एक क्लास एक्शन मुकदमे में नामजद किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मशहूर हस्तियों के प्रचार ने एथेरियम मैक्स क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा दिया, जिसे निवेशकों ने पंप एंड डंप स्कीम बताया। और सौभाग्य से बाल बचते हुए फ्लॉयड को धोखाधड़ी का दोषी नहीं पाया गया। और हालांकि उन्होंने आसान पैसे कमाने के लिए अपने फॉलोअर्स को जानबूझकर गुमराह करने की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन उन्होंने सचमुच स्वीकार किया कि लोगान के साथ लड़ाई एक डकैती थी, यानी उन लोगों की जेब से पैसे चुराना जिन्होंने सोचा था कि ये एक निष्पक्ष लड़ाई है। और फिर जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास डकैती करने का मौका है, एक त्वरित डकैती, तो मैं आप सभी को ये बता दूंगा, आप सभी जो चाहे कह सकते हैं, दिन के अंत में मैं ही चतुर हूँ। लोगान का दावा है कि फ्लॉयड पे आज भी उनका पैसा बकाया है। मेरा मतलब फ्लॉयड मैंने फ्लॉयड के साथ लड़कर उतना पैसा नहीं कमाया जितना आप सोचते। क्या आपको उसका भुगतान मिला? उस पर अभी भी मेरे 1.5 मिलियन शायद उससे भी ज्यादा बकाया है। तो आपको पैसे कैसे देता है? अब बस ऐसे क्यों नहीं करता? देखिए क्या हुआ, उसने मेरी छवि का उपयोग करके दुबई या मध्य पूर्व की किसी कंपनी को $1 करोड़ नकद में लड़ाई पहले से बेच दी थी। हमने अंततः अमेरिका में एक अलग कंपनी के साथ लड़ाई की। वो वही कंपनी जिसने लड़ाई का आयोजन किया, वही कंपनी है जिसने भुगतान। लेकिन उसने दुबई में किसी और को $1 करोड़ नकद में मेरे नाम और छवि के साथ हमारी लड़ाई बेच दी। ये हमारी लड़ाई हुई। हमारी डील 50% की थी, तो मुझे बुरी तरह हरा सकता था, तो मुझे उसका 15% मिला। $10 मिलियन का 15.15 मिलियन होता है। और मजे की बात यह है कि फ्लॉयड ने इसे नकारा भी नहीं। उनके भाई ने कहा कि आपने उन्हें उस फाइट के पैसे नहीं दिए जो आप दोनों के बीच हुई थी। लोगन पॉल से इस बारे में आपका क्या कहना है? उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूं। अब इस विशेष मामले में ज्यादातर लोग मेवेदर के पक्ष में हैं। जो कोई भी बॉक्सिंग जानता है उसे पता है कि फ्लॉयड कभी भी अपना 50-0 का परफेक्ट रिकॉर्ड खोने की स्थिति में खुद को नहीं डालेंगे, भले ही वो सिर्फ एक प्रदर्शनी मैच ही क्यों न हो। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को अब लोगन पॉल के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, इसलिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उन्हें फ्लॉयड से $1.5 मिलियन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन लोगों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए लाखों डॉलर का इनाम पाना एक खतरनाक चक्र बन गया, जिसमें वे स्पष्ट रूप से फंस गए थे। पेशेवर बॉक्सिंग से कई बार संन्यास लेने और कुछ प्रदर्शनी मैचों के बाद रिंग में वापसी को लेकर उत्साह पैदा करने की मेवेदर की क्षमता कम होती गई। इसलिए उन्हें अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को परखने की जरूरत थी कि क्या वे वास्तव में कुछ राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। मेवेदर बॉक्सिंग एंड फिटनेस एक बॉक्सिंग स्टूडियो उनके शुरू करने के लिए सबसे स्पष्ट व्यवसाय लग रहा था। अजय विश्व चैंपियन के रूप में उनकी साख ने उनके व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कक्षाओं को विश्वसनीयता दी और शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। 2021 तक देश भर में दर्जनों अलग अलग स्थान खुल गए थे और 200 अन्य स्टूडियो फ्रेंचाइजी को विकास के लिए बेच दिए गए थे। फ्लॉयड द्वारा शुरू किए गए क्राउड फंडिंग अभियान में यह भी दावा किया गया कि ब्रांड में एक दिन $multi-billion की आईपी बनने की क्षमता है, लेकिन पर्दे के पीछे व्यवसाय और उसके निवेशक दोनों हर साल लाखों डॉलर गंवा रहे थे। एसईसी द्वारा जारी बैलेंस शीट से पता चलता है कि व्यवसाय को 2021 और 2022 में कुल $7 मिलियन का शुद्ध नुकसान हुआ। ये नुकसान सीधे तौर पर उन लोगों से जुड़ा था जिन्होंने मेवेदर के ब्रांड के तहत अपने स्टूडियो चलाने के लिए फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदे थे। कई व्यक्तियों ने बताया कि उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी में $10 लाख से अधिक का निवेश किया, लेकिन अंततः उन्हें बहुत कम रिटर्न मिला और उन्होंने अपने केंद्र बंद कर दिए 2023 में खुली 70 फ्रेंचाइजी में से 2025 तक केवल 26 ही चालू रही। इस बीच मेवेदर खुद रॉयल्टी के रूप में $3 मिलियन कमा रहे थे। कई असंतुष्ट फ्रेंचाइजी मालिकों की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पूर्व एथलीट ने निवेश के मामले में उन्हें जानबूझकर गुमराह किया था। मेवेदर के वकीलों का दावा है कि व्यवसाय के प्रबंधन, संचालन या रणनीतिक निगरानी में उनकी बहुत कम या कोई भागीदारी नहीं थी। वे ये भी संकेत देते हैं कि इन व्यक्तियों ने वित्तीय लाभ के लिए उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व का शोषण किया था। ये विडंबनापूर्ण है और लगभग पागलपन है ये देखते हुए कि उनका जिम, उनकी फ्रेंचाइजी जिसे उन्होंने खुद उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया था, का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, तो स्वाभाविक रूप से वे उनके नाम और छवि का उपयोग करें। हालात तब और बिगड़ गए जब एक लोकेशन के कर्मचारियों ने भुगतान न मिलने के विरोध में धरना दिया। प्रभावित लोगों के लिए समस्या को हल करने के बजाय उसी दिन फ्लॉयड एक खराब चेक से $2000 की घड़ी खरीद रहे थे लेकिन बेशक उन्होंने दावा किया कि उन्हें नहीं पता था कि एक खराब चेक है और उनका जौहरी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। फ्लॉयड अक्सर अपने अरबों डॉलर के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के बारे में डींगे मारते हैं, जिसमें कथित तौर पर न्यूयॉर्क शहर में स्थित 9 गगनचुंबी इमारतें शामिल हैं। दरअसल अभी मेरे पास जो है वो 9 गगनचुंबी इमारतें हैं। हालांकि इस दावे को कभी पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन इसकी पर्याप्त रूप से पुष्टि भी नहीं हुई है। वास्तव में सभी संकेत बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण दावा है। फ्लॉयड ने सार्वजनिक रूप से खुद को वन वेंडरबिल्ट से जोड़ा है। 2018 में ये संकेत दिया था कि वे इमारत के निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे।
वास्तव में यह इमारत कई स्वामित्व समूहों के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्वामित्व में है। ऐसा प्रतीत होता है कि फ्लॉयड सौदे में शामिल कंपनियों में से एक के शेयर रख सकते हैं, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से 100% स्वामित्व नहीं है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या वे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, या क्या वे वास्तव में मानते हैं कि वे इन इमारतों के मालिक हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वे अपर मैनहट्टन में 62 अपार्टमेंट इमारतों के मालिक हैं। फ्लॉयड ने अधिग्रहण की घोषणा करते समय सीधे तौर पर कहा कि उनके पास बिना किसी साझेदार के सौंदर्य स्वामित्व है और उन्होंने अपनी निवेश फर्म वाडा प्रॉपर्टीज के माध्यम से अपने स्वयं के $402 मिलियन लगाए। हालांकि घोषणा के हफ्तों बाद भी आधिकारिक स्वामित्व कभी भी फ्लॉयड को हस्तांतरित नहीं किया गया था। जब बिजनेस इनसाइडर द्वारा प्रकाशित एक लेख में इसका खुलासा हुआ तो फ्लॉयड मेवेदर ने संस्थान के खिलाफ $100 मिलियन का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। फ्लॉयड को शायद उम्मीद थी कि इसे बिजनेस इनसाइडर पर अपना लेख वापस लेने का दबाव बनेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और फिर उसके कुछ ही समय बाद मुकदमे को पूर्वाग्रह के साथ एक परफेक्ट मैच। हाँ एक परफेक्ट मैच। एक स्किंट हेड एंड शोल्डर्स तो हनु डैंड्रफ है नहीं था, क्योंकि मैं हेड एंड शोल्डर्स दा नवा एक्टिव क्लेंज यूज करता हां। इस विच 2x एक्टिव डेपोजिशन जो छोटे तो छोटे फ्लेक्स भी कड्डे, क्योंकि प्यार विच स्पार्क्स होने चाहिए ने, फ्लेक्स नहीं। की हाल है भाजी? खारिज कर दिया गया। इस बीच फ्लॉयड ने एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी स्थिति पर संदेह करने के और भी कारण देना जारी रखा। बिजनेस इनसाइडर ने एक बात के लेख में खुलासा किया कि मेवेदर कई $मिलियन के ऋण ले रहे थे, जबकि वे अपने कई निवेशों के लिए महत्वपूर्ण भुगतान करने में विफल रहे थे। उनके स्वामित्व वाले घरों को संपत्ति कर का भुगतान न करने के कारण जब्त किया जा रहा था और उनके निजी जेट के ईंधन बिल का भुगतान न करने के बाद मुकदमे दायर किए गए थे। लेख में यह भी खुलासा हुआ कि अदालतों ने मेवेदर को एक सार्वजनिक उपस्थिति से चूकने के बाद $2.4 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसके लिए वे पहले ही भुगतान ले चुके थे। जैसे कि ये काफी बुरा नहीं था, उन्होंने निपटान का भुगतान करने में देरी की और चक्रवृद्धि ब्याज ने कुल शुल्क को $3 मिलियन से अधिक कर दिया। फ्लॉयड द्वारा बनाया गया झूठ और खराब बिजनेस डील्स का साम्राज्य उसके चारों ओर ढह रहा था और स्थिति को और खराब करने के लिए जिस एक व्यक्ति के पास वो किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक मामले के लिए जा सकता था, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। जोना रिचनिच फ्लॉयड का पूर्व वित्तीय सलाहकार है और उसने एक बार कहा था, मैं जोना पर भरोसा करता हूँ, सिर्फ 10%, 20% नहीं बल्कि 100%। इस भावना को व्यक्त करने के केवल एक साल बाद जोना फ्लॉयड द्वारा ही दायर $175 मिलियन के मुकदमे में बलि का बकरा और प्रतिवादी बन गया। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जोना ने उन बिजनेस डील्स के बारे में गुमराह किया और झूठ बोला जिनमें वो कथित तौर पर निवेशित था। फ्लॉयड के अनुसार जब उसने मैनहट्टन में बातें नहीं का दावा किया था तो वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा था, बल्कि जोना ने उसका फायदा उठाया था। सुविधाजनक रूप से जोना इन सब के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार है। बाउंस हुए चेक, विमान ईंधन के भुगतान न किए गए बिल, न्यूयॉर्क शहर की गगनचुंबी इमारतों के मालिक होने के भी दुखिता। फ्लॉयड का दावा है कि ये सब जोना के शिकारी व्यावसायिक तरीके थे। फ्लॉयड का यह भी दावा है कि जोना ने अपने क्लाइंट की जानकारी के बिना $13 मिलियन का ऋण लेने के लिए $100 मिलियन के गहनों को गिरवी रखा था। जोना ने न केवल इन आरोपों से इनकार किया, बल्कि उसने यूट्यूबर स्पेंसर कॉर्नेलिया के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सबूत भी पेश किए। अगस्त 2025 के आसपास फ्लॉयड को नकदी की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने गहने गिरवी रखना शुरू करने का फैसला किया। यहाँ 25 अगस्त 2025 का एक मैसेज है जिसमें जोना ने फ्लॉयड को उसकी घड़ी की एक तस्वीर और नीचे लोन शब्द भेजा है। ये दर्शाता है कि वो घड़ी उस समूह का हिस्सा थी जिसे गिरवी रखा जा रहा था। यहाँ उस दिन भेजी गई दूसरी तस्वीर है। ऊपर वाली तस्वीर उन घड़ियों का संग्रह है जिन्हें नवंबर के ऋण के लिए एक साथ रखा गया था और उनमें से कई को बैलेंस चुकाने के बाद वापस कर दिया गया था। यहाँ अगला मैसेज है जिसमें घड़ियों का एक और संग्रह जिसे ऋण के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे फ्लॉयड ने अपनी शिकायत में शामिल किया था। इस सूची में वे 4 घड़ियां हैं जिन्हें आप दाईं ओर के टेक्स्ट मैसेज में देख सकते हैं, जो उन घड़ियों के समूह में शामिल थी जिन्हें गिरवी रखा गया था। ये दर्शाता है कि वो इस बात के बारे में झूठ बोलना जारी रखे हुए उसे नहीं पता था कि उसकी घड़ियां उसकी जीवनशैली को नदी देने के लिए ऋण के बदले गिरवी रखी जा रही थी। टेक्स्ट मैसेज ये भी दिखाते हैं कि फ्लॉयड ने सीधे तौर पर $13 मिलियन के ऋण को स्वीकार किया है, जिसमें से अधिकांश बैलेंस उन घड़ियों को गिरवी रखकर चुकाया जाना था जिन्हें उसने कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल किया था। अब फ्लॉयड का अपने शानदार घड़ी संग्रह से नकदी प्राप्त करने का तरीका ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। समस्या यह है कि इससे एक बिजनेस मास्टरमाइंड के रूप में उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है। जनता की नजरों में ये उसे पैसों के लिए हताश दिखाता है और ऐसा भी लगता है कि वो अपनी ही बुनियादी सलाह का पालन नहीं करता है। अगर आप 1000 कमाते हैं तो आपको 50,000 अलग रखने होंगे। अगर आप 100 मिलियन कमाते हैं तो आपको 50 मिलियन अलग रखने होंगे। आपको बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने ही होंगे। मेवेदर का आरोप है कि जोना ने उनसे उनका गल्फ स्ट्रीम जेट किसी अज्ञात खरीदार को अज्ञात राशि में बिकवाया। उनका यह भी दावा है कि जोना ने एसएल ग्रीन में निवेश से संबंधित $15 मिलियन की राशि का गबन किया। खैर, ये पूरी तरह संभव है कि जोना इन आरोपों का दोषी हो। मेवेदर की टीम में कोई आसानी से संदिग्ध व्यावसायिक सौदे कर सकता है या सीधे तौर पर उनसे चोरी कर सकता है, लेकिन जब मेवेदर जोना से $175 मिलियन वसूलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक और कंपनी जिसे उन्होंने कथित तौर पर धोखा दिया है वो उनसे दोगुनी रकम के लिए मुकदमा कर रही है। 2025 में CSI स्पोर्ट्स नामक एक प्रमोशन कंपनी ने उन पर मुकदमा दायर किया। मुकदमे में दावा किया गया है कि उन्होंने माइक टायसन से लड़ने के लिए मेवेदर को $14 मिलियन का अग्रिम भुगतान शामिल जताई थी, जिसमें $2 मिलियन का अग्रिम भुगतान शामिल। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें माइक टायसन के बाद होने वाली लड़ाई के विशेष अधिकार मिलने थे जो मैनी पैक्याओ के साथ होनी थी। बुजुर्ग मुक्केबाजों की और भी नकदी लूटने वाली कोशिश है। CSI का दावा है कि मेवेदर ने दिसंबर में एक अन्य कंपनी एवरलास्ट के साथ $24.70 मिलियन का समझौता किया, जिसमें $2.70 मिलियन का अग्रिम और $3.7 मिलियन की संभावना शामिल थी एक बार फिर एक और व्यावसायिक सौदा जहां मेवेदर को कुछ नकद तो मिल जाता है, लेकिन फिर इस बात पर विवाद होता है कि किसके पास क्या अधिकार हैं, किसे पैसे बकाया हैं और असल में क्या वादे किए गए थे। ये एक ऐसे व्यवसायी की तस्वीर पेश करता है जो बार-बार कानूनी ग्रे क्षेत्रों में काम करता है और जिसका अंत लगभग हमेशा अदालत में होता है, लेकिन अब उनका कर्ज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वो अभी भी बाउंस चेक जारी करने के लिए गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्हें चाइल्ड सपोर्ट भुगतान के रूप में $1 मिलियन चुकाने का आदेश दिया गया था और उन पर बिना भुगतान किए गए करों के लिए $72 मिलियन का IRS लीन भी है। और इस सब का नतीजा ये हुआ है कि फ्लॉयड जहां भी संभव हो पैसे के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।
हालांकि कई मीडिया आउटलेट उन्हें जल्दी ही कंगाल बता देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सरल विश्लेषण है। ऐसा लगता है कि फ्लॉयड ने बहुत अधिक अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाया है या बहुत से लोगों को नाराज किया है और वे अब इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वो अभी लाखों मुकदमों में फंसे हुए हैं। हमारे पास ये मानने का ठोस कारण है, ये देखते हुए कि उनके टैक्स अटॉर्नी ने खुद इसे स्वीकार किया है कि वो कर्ज चुकाने में यथासंभव देरी करते हैं, और लेकिन कोई भी IRS के लिए बुरा महसूस नहीं करता है और ये उनकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है। हालांकि कौन कह सकता है कि फ्लॉयड यही रणनीति जौहरियों, फ्रेंचाइजी मालिकों, विपक्षी मुक्केबाजों, बॉक्सिंग प्रमोटरों और बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं अपनाते। खैर, क्योंकि लोगों को जानबूझकर गुमराह करना या समझौता होने के बाद इरादतन भुगतान न करना धोखाधड़ी माना जाएगा। और बेशक फ्लॉयड मेवेदर जूनियर ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन इस पैटर्न को अनदेखा करना नामुमकिन है। जब भी बिजनेस डील सही रहती हैं तो फ्लॉयड अपनी तथाकथित जीनियस बिजनेस बुद्धि का बखान करते हैं, लेकिन जब डील्स गलत होती हैं तो उन्हें पता नहीं होता उनका इरादा नहीं था या ये किसी और की गलती होती है, जिसके बाद मुकदमे शुरू हो जाते हैं। समस्या यह है कि 39 की उम्र में वो इतने बूढ़े या अविश्वसनीय हो चुके हैं कि अब करोड़ों कमाने के लिए कोई फाइट आयोजित करना और कर्ज से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। और अगर फ्लॉयड अपने दावों के मुकाबले 10% भी सफल होते तो उन्हें रिंग में वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके रिंग में वापस आने का एकमात्र तार्किक कारण यही है कि वो उतने सफल बिजनेसमैन नहीं है जितना होने का वो दावा करते हैं। और अगर आपको महान फाइटर्स के उत्थान और पतन के बारे में जानना पसंद है तो कॉनर मैकग्रेगर पे बनाया गया मेरा ये वीडियो देखें। भाई सही तरीका तो सही है, पर fucked up. भाई weather fucked up. इतना गंदा 50 cent is right about this shit. Sure, 50 cent is right about जो भी उन्हें किल्ला गई है, पहले ही पता सी कि मई वेदर अपने पैसे इस्तेमाल करना था। शायद एक वीडियो CIA ने पोकेमोन को क्यों बनाई। CIA ने कहीं सोचा कि पोकेमोन को अपन किसी के लिए जापानीज लोग ने बनाई, अपन नहीं, तो CIA ने बनाई सी लोग का स्पाई कर रहे हैं। क्रेजी चीज है, चलो वीडियो देखते हैं। अरे और पे दो क्रेजी चीज है, चलो वीडियो देखते हैं कि क्या दे गया। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि पोकेमॉन गो के संस्थापक जॉन हैके को इनक्यूटेल से फंडिंग मिली थी, जो CIA द्वारा बनाई गई वेंचर कैपिटल फर्म है। और जब आप और आपके दोस्त अपने पसंदीदा पोकेमॉन को पकड़ने के लिए शहर में घूम रहे थे और धरती को स्कैन कर रहे थे, तो गेम का डेवलपर नियांटिक इनकॉर्पोरेटेड उस सारे डेटा को इकट्ठा कर रहा था और उसका इस्तेमाल तीसरे दुनिया के देशों पर सैन्य हमलों को सुविधाजनक बनाने में कर रहा था। देखिए, पोकेमॉन गो उसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जिसने अनिवार्य रूप से गूगल मतलब पोकेमोन गो यूज करेगा देवी जो वर्ल्ड वॉर होगी थी कितना और भी टैक्टिक्स यूज करूंगी सोने दे। ये सोचिए क्या हमने अर्थ बनाया था। जॉन हैके कीहोल के सह संस्थापक थे जिसने अर्थव्यूअर नामक एक 3D डिजिटल मैपिंग प्रोग्राम विकसित किया था। कीहोल का अर्थव्यूअर 3D क्लाइंट एप्लीकेशन वीडियो गेम जैसी 3D ग्राफिक्स और नेटवर्क होस्टेड पृथ्वी जानकारी के विशाल डेटाबेस तक पहुंच का उपयोग करता है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी और एरियल फोटोग्राफी शामिल है, ताकि पृथ्वी का एक इंटरैक्टिव डिजिटल मॉडल तैयार किया जा सके। ये उत्पाद 2000 के दशक की शुरुआत में किसी भी अन्य चीज से बिल्कुल अलग था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि इसका उपयोग किस लिए होगा, और इसलिए कीहोल का बहुत पैसा बर्बाद हो रहा था। सालों तक हर कुछ महीनों में जॉन खुद को सिलिकॉन वैली के निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए संघर्ष करते पाते थे ताकि कंपनी चलती रहे। ये तब तक था जब तक इनक्यूटेल ने उनकी कंपनी को डूबने से नहीं बचाया। फिर हमें वास्तव में एक जीवन रेखा मिली, एक तरह के असामान्य स्रोत से। इनक्यूटेल एक नई छोटी वेंचर कैपिटल फर्म थी जो मूल रूप से एक सरकारी VC फर्म थी जिसके पास खुफिया समुदाय से पैसा आता था। तो वो वैली के उन कुछ फंडों में से एक था जो वास्तविक व्यापार कर रहे थे और वे उस समय बहुत सारे निवेश कर रहे थे। ये 9 बिट 11 के बाद की सुरक्षा तैयारियों वाले दौर की बात थी, और इसलिए उन्होंने हमारी तकनीक के बारे में पता लगाया और कंपनी में कुछ $1 मिलियन का निवेश किया।
इन क्यूटेल की फंडिंग की बदौलत कीहोल इराक में सैनिकों और पेंटागन को तकनीक की आपूर्ति कर रहा था और भारी मात्रा में सरकारी अनुबंध मिलने के कारण वे अंततः एक लाभदायक कंपनी बन गए। इसके कुछ ही समय बाद 2004 में गूगल ने कीहोल का अधिग्रहण कर लिया और उन्होंने इस तकनीक को उस रूप में बदल दिया जिसे हम आज गूगल अर्थ के रूप में जानते हैं। गूगल द्वारा अधिग्रहण के बाद जॉन हैके कंपनी के जियो डिवीजन के लिए उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष बने, जहां उन्होंने गूगल अर्थ और मैप्स जैसे उत्पादों की देखरेख की। गूगल अर्थ क्रांतिकारी था क्योंकि इसने हर किसी को घर के कंप्यूटर से लगभग पूरी दुनिया की विस्तृत सैटेलाइट। हर कोई जानता है कि क्रिएटिन सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया सप्लीमेंट है, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया था कि इसका स्वाद इमेजरी तक पहुंच प्रदान की। आप अनजान शहरों को देख सकते थे, रहने जाने से पहले पड़ोस का निरीक्षण कर सकते थे और यात्राओं की योजना बना सकते थे, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। मानवीय संगठनों ने इसका उपयोग आपदा राहत के समन्वय के लिए करना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन की निगरानी की। पुरातत्वविदों ने इसका उपयोग पहले से अज्ञात खंडहरों को खोजने के लिए किया। पत्रकारों ने युद्ध क्षेत्रों की जांच की और सरकारों ने इसका उपयोग किया क्योंकि ये उनके पास मौजूद किसी भी चीज से बेहतर था। जो उत्पाद उन तरीकों से इस्तेमाल हुआ जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं बस इसी तरह कहूँ। जब न्यू ऑर्लियंस में कैटरीना तूफान आया तो कोस्ट गार्ड गूगल अर्थ और क्रेगलिस्ट का उपयोग करके पता लगा रहे थे कि लोग कहाँ फंसे हैं और उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे थे। ये काफ़ी अजीब है। आप सोचेंगे कि वे सरकार हैं, उनके पास बहुत सारा आधुनिक सॉफ्टवेयर है और जिसमें पहले से डेटा है वो इस्तेमाल करने में आसान है। सच में पहले से डेटा है वो इस्तेमाल करने में आसान है। सच में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन गूगल के कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में 6 साल काम करने के बाद हैंकी डिजिटल मैप्स और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में सीखी गई हर चीज़ को मिलाकर एक वीडियो गेम बनाने की आज़ादी चाहते थे। अब अगर आप मुझसे पूछें तो ये करियर में एक अजीब बदलाव लगता है। तकनीकी रूप से जॉन के अर्थव्यवर उत्पाद की नींव कॉलेज में ही पड़ गई थी जब वो अपने सहपाठियों के साथ एक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम के विचार पर काम कर रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि तकनीक में और भी बहुत संभावनाएं थी और ऐसा ही हुआ। तो अपनी दूरदर्शिता से दुनिया बदलने, सैन्य अभियानों के लिए CIA वित्त पोषित स्टार्टअप बनाने और फिर एक टेक दिग्गज द्वारा अधिग्रहित होने के बाद वापस वीडियो गेम डेवलपर बनना करियर और जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव लगता है। ऐसा तब तक है जब तक कि किसी बड़ी योजना का हिस्सा न हो। गूगल वास्तव में नहीं चाहता था कि जॉन हैके कंपनी छोड़ें। किसी भी कारण से उन्हें लगा कि उनका वीडियो गेम विचार भविष्य में उनके लिए मूल्यवान हो सकता है, इसलिए उन्होंने उन्हें गूगल के भीतर एक स्वायत्त इकाई के रूप में नियंत्रित लैब्स बनाने के लिए मना लिया। मूल रूप से उन्होंने उन्हें एक स्टार्टअप बनाने की आज़ादी दी, लेकिन गूगल के संसाधनों का उपयोग गूगल की चारदीवारी के भीतर ही करने को कहा। यदि ये विफल रहता तो गूगल को अपना कर्मचारी वापस मिल जाता, और यदि ये सफल होता तो गूगल एक शुरुआती निवेशक की एक बड़े वीडियो गेम नवाचार का आंशिक मालिक बन सकता था। नियंत्रित का पहला बड़ा उत्पाद फील्ड ट्रिप नाम का एक ऐप था, जो एक वर्चुअल टूर गाइड था जो उपयोगकर्ता के स्थान का विश्लेषण करता था, पास के दर्शनीय स्थलों पर जाने के सुझाव देता था और क्षेत्र के बारे में जानने के सुझाव देता था और क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता था। ये बहुत बड़ा गेम नहीं था, लेकिन इसने उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट इनग्रेस की नींव रखी। 2012 में लॉन्च हुआ इनग्रेस एक ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम था जो उपयोगकर्ताओं को अपने पड़ोस का पता लगाने और आसपास के स्थलों पर पोर्टल खोजने के लिए प्रेरित करता था। ये सचमुच पोकेमॉन गो जैसा ही विचार था। जिन्होंने इसे खेला वे इसके नशे में धुत थे। हालांकि रिलीज के वर्षों बाद भी ये एक बड़ा प्लेयर बेस बनाने में विफल रहा। नियंटिक के लिए सौभाग्य से खेल के खिलाड़ियों में से एक पोकेमॉन कंपनी से सीधा संबंध रखने वाला एक अमूल्य संपत्ति साबित हुआ। लेकिन जल्दी से, मुझे यकीन है कि आप सभी ने कभी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल किया होगा अपने एयरपोर्ट पर या स्थानीय कॉफी शॉप में, और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बना लेते हैं। ये नेटवर्क अक्सर सुरक्षित होते हैं और इनमें पर्याप्त एन्क्रिप्शन की कमी होती है। ये किसी के लिए भी आपकी इंटरनेट गतिविधियों पर जासूसी करने का अवसर पैदा करता है, जिससे गोपनीयता स्टार्क VPN आपके IP ऑनलाइन असुरक्षित छोड़ना बंद करें और surfshark.com/patrickcc पर जाएं और 30 दिन वो जापान गए और इस फीचर को लागू करने के लिए पोकेमॉन कंपनी से सीधी अनुमति ली। जॉन हैंके ने नोमरा से पोकेमॉन कंपनी के इंजीनियर के लिए कोड पैट्रिक छोड़ना बंद करें और surfshark.com/surfshark तात्सु नोमरा नामक एक जापानी गूगल मैप्स इंजीनियर ने अप्रैल फूल्स के मजाक के रूप में गूगल मैप्स में पोकेमॉन को रखने का विचार रखा। वो जापान गए और इस फीचर को लागू करने के लिए पोकेमॉन कंपनी से सीधी अनुमति ली। जॉन हैंके ने नोमरा से पोकेमॉन कंपनी के कार्यकारी बोर्ड को इनग्रेस गेम दिखाने के लिए कहा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि पोकेमॉन कंपनी के अध्यक्ष पहले से ही इस गेम के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इसी वजह से नियंटिक निंटेंडो के साथ साझेदारी हासिल करने और पोकेमॉन को बनाने में सक्षम हो पाया। उन्होंने 6 जुलाई 2016 को गेम लॉन्च किया, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इसके बाद कैसी अफरा तफरी मचेगी। रिलीज होने के सिर्फ 2 महीने के भीतर ऐप को 50 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया था और औसतन लगभग 2.1 करोड़ खिलाड़ी हर दिन लॉगिन करते थे। इसने न केवल कैंडी क्रश या क्लैश रॉयल जैसी मोबाइल गेम्स की सफलता को पीछे छोड़ दिया, बल्कि ये ट्विटर और फेसबुक जैसी वेबसाइटों से भी अधिक एंगेजमेंट खींच रहा था। संकल्पना सरल थी। आप अपने पड़ोस में घूमते थे और वर्चुअल पोकेमॉन की तलाश करते थे। जब आप एक ढूंढ लेते थे तो गेम आपके फोन के कैमरे का उपयोग ये दिखाने के लिए करता था कि पोकेमॉन आपके ठीक सामने है और आप उन्हें पकड़ने और अपने कलेक्शन में जोड़ने के लिए पोकेबॉल्स का उपयोग करते थे। गेम उपयोगकर्ताओं को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता था, जो उल्लेखनीय स्थानों या लैंडमार्क पर विभिन्न डिजिटल पोके स्टॉप प्रदान करता था। ये पोके स्टॉप इन गेम आइटम इकट्ठा करने और अधिक पोकेमॉन को आकर्षित करने के लिए विशेष लूर्स का उपयोग करने के लिए एक हब के रूप में काम करते थे। इसमें पोकेमॉन जिम भी शामिल थे। खिलाड़ी 3 टीमों में से एक का चयन करते थे और पोके कॉइन्स कमाने और अपग्रेड खरीदने के लिए क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिद्वंदी पोकेमॉन हंटर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। पोकेमॉन गो सिर्फ एक और मोबाइल वीडियो गेम नहीं था, इसने आपके स्थानीय इलाके को एक काल्पनिक दुनिया में बदल दिया। यही कारण है कि यह तुरंत एक सांस्कृतिक घटना बन गया। सार्वजनिक पार्क दुर्लभ पोकेमॉन की तलाश करने वाले खिलाड़ियों से भरे पड़े थे। रेस्तरां और दुकानों ने अपने व्यवसाय का प्रचार करने के लिए पास के पोके स्टॉप का उपयोग किया और कंटेंट क्रिएटर्स केवल गेम खेलकर लाखों व्यूज बटोर रहे थे।
ये गेम मुख्यधारा की पॉप संस्कृति में तेजी से आगे बढ़ा, देर रात के टेलीविजन शो में चर्चा का विषय बन गया और 2016 के अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान हिलेरी क्लिंटन द्वारा इसका कुख्यात उल्लेख किया गया था। मुझे नहीं पता कि पोकेमॉन किसने बनाया, लेकिन मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम उन्हें पोकेमॉन गो टू द पोल कैसे बनवाएं। ये कहना सुरक्षित है कि पोकेमॉन गो दुनिया पर कब्जा कर रहा था, लेकिन ये केवल अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले नंबरों के लिए सुर्खियां नहीं बना रहा था। इसे वास्तविक दुनिया की दुर्घटनाओं, जीवन बदलने वाली चोटों और यहाँ तक कि मौतों से भी जोड़ा जा रहा था। गेम रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद पोकेमॉन गो खेलते समय 2 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने दूसरी तरफ पोकेमॉन तक पहुंचने के लिए एक बाड़ को पार किया और पास ही एक चट्टान पर अस्थिर जमीन के बारे में पैदल चलने वालों को चेतावनी देने वाले संकेत को अनदेखा कर दिया, जिससे दोनों व्यक्ति अंततः नीचे गिर गए। खिलाड़ियों को गंभीर चोटें आई, लेकिन सौभाग्य से वे बच गए। दूसरे इतने भाग्यशाली नहीं थे। जापान में एक ट्रक ड्राइवर ने पोकेमॉन गो खेलते समय 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गई और दूसरी की मौत हो गई। गेम के खिलाड़ी खुद को लगातार खतरनाक स्थितियों में पाते गए, क्योंकि ड्राइवर और पैदल चलने वाले दोनों ही ऐप से विचलित हो रहे थे और लोग जितनी ज्यादा पोकेमॉन की दुनिया में डूबते गए, उनका अपने आसपास की दुनिया से संपर्क टूटता गया। खिलाड़ियों ने धार्मिक सेवाओं और अंतिम संस्कारों में बाधा डालना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन डीसी में होलोकॉस्ट संग्रहालय ने लोगों से उनके संस्थान के अंदर गेम खेलना बंद करने के लिए कहा। खिलाड़ी Stop. Before you buy this exact product could be इंटरनेशनल कब्रिस्तान में भी व्यवधान पैदा कर रहे थे, जिससे शोक संतप्त परिवारों और सम्मान देने वाले सैन्य सदस्यों के लिए समस्याएं पैदा हो रही थीं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, पोकेमॉन गो की लोकप्रियता बढ़ने के बाद वीडियो गेम उद्योग डेवलपर्स के बारे में अधिक जानने में बेहद रुचि रखने लगा। सैन फ्रांसिस्को में टेकक्रंच पर एक लाइव ऑडियंस के सामने नियंत्रिक लैब्स के जॉन हैके का साक्षात्कार लिया गया और ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी टीम में है। मैं पीली टीम में हूँ, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। मैं भी। टीम इंस्टिंक्ट क्या यहाँ कोई है? टीम इंस्टिंक्ट तो ये रही। मैं मंच पर से वापस ठीक करने की कोशिश नहीं करने वाला। ये पागलपन है कि गेम के निर्माता इस सवाल का ठीक से जवाब भी नहीं दे सके। आप किस टीम में हैं, जो उन 3 गुटों में से एक को संदर्भित करता है जिनमें खिलाड़ी 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद शामिल हो सकते हैं। टीम वैलर जो लाल है, टीम मिस्टिक जो नीली है या टीम इंस्टिंक्ट जो पीली है। उसने बस कहा वो पीली वाली। साक्षात्कार लेने वाला स्पष्ट रूप से एक बड़ा पोकेमॉन प्रशंसक था और हैके बिल्कुल इसके विपरीत लग रहे थे। खिलाड़ियों के लिए ये निराशाजनक था कि 2016 के सबसे वायरल गेम को, जो अब तक के सबसे पसंदीदा आईपी में से एक के इर्द गिर्द था, एक उबाऊ कॉर्पोरेट अधिकारी द्वारा संचालित किया जा रहा था। लेकिन जो विशेष रूप से दिलचस्प था वो था अलग अलग देशों में गेम लॉन्च करने से पहले सरकारों के साथ काम करने पर उनके विचार। तो हम अभी गेम के रोल आउट चरण में हैं। क्या आप जानते हैं कि अगला रोल आउट देश कौन सा होने वाला है? वो मुझे काफ़ी अच्छा अंदाज़ा है, लेकिन ये लंबित है वो सरकारी संबंधों के पक्ष में चीज़ों को व्यवस्थित करने और सब कुछ तैयार करने पर, तो मैं अभी नहीं बता सकता। ये दिलचस्प रहा है कि आप जानते हैं हमने वास्तव में उस स्तर की उम्मीद नहीं की थी जिस तक ये सरकारी लोगों और नीति निर्माताओं और इस तरह की चीज़ों से रुचि आकर्षित करेगा, लेकिन अब ये संवाद का हिस्सा बन गया है। तो हम उन कौशलों में और अधिक कुशल हो रहे हैं। अब हम वास्तव में नहीं जानते कि सरकारों की गेम में क्या रुचियाँ थीं। अब मैं कल्पना कर सकता हूँ कि सरकारों को स्पष्ट चिंताएं थीं, जैसे कि पार्कों में हजारों लोगों का जमा होना, लोगों का बिना देखे ट्रैफिक में चलना आदि। लेकिन हैके ने चिंता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने रुचियां कहा। एक और ध्यान देने वाली बात यह थी कि दक्षिण कोरिया ने गूगल को अपने विस्तृत सरकारी मानचित्र डेटा को विदेशी सर्वर पर निर्यात करने से मना कर दिया, इस डर से कि इससे उत्तर कोरिया के सामने सैन्य ठिकाने और अन्य संवेदनशील स्थान उजागर हो सकते हैं, जिससे अधिकांश दक्षिण कोरिया में पोकेमॉन को लॉन्च करना लगभग असंभव हो गया। चीन भी भौगोलिक डेटा तक विदेशी पहुंच को भारी रूप से विनियमित करता है और उसने गूगल मैप्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो विस्तृत मैपिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानता है। दूसरे शब्दों में, जहां अधिकांश खिलाड़ी पोकेमॉन गो को एक हानिरहित मोबाइल गेम के रूप में देखते थे, वहीं पूरी सरकारें इसके पीछे के डेटा को एक संभावित खतरनाक सैन्य संपत्ति की तरह मान रही थीं। सवाल यह है कि क्या नियांटिक लैब्स को पता था कि वे एक खतरनाक सैन्य संपत्ति का उपयोग कर रहे थे? खैर, एक विवाद सामने आया था जहां आईफोन उपयोगकर्ताओं ने पाया कि गूगल के माध्यम से साइन इन करने से नियांटिक को उनके खातों का पूर्ण एक्सेस मिल गया। गूगल के अपने विवरण के अनुसार इसका मतलब खाते में किसी भी चीज को देखने और संशोधित करने दोनों का एक्सेस था। कई लोगों का मानना था कि इसका मतलब उनकी छवियों, वीडियो और ईमेल तक बिना फिल्टर के पहुंच है। हालांकि ये इतना सरल नहीं था। नियांटिक ने कहा कि उसके पास केवल उपयोगकर्ताओं की आईडी और ईमेल पतों तक पहुंच थी और गूगल ने व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया कि कंपनी को कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई थी। तो चूंकि नियांटिक केवल अकाउंट बनाने से डेटा नहीं चुरा सकता था, इसलिए उन्हें उपयोगकर्ताओं को मुफ्त में इसे देने के लिए धोखा देना पड़ा। और इसका नतीजा एक मोबाइल गेम के पीछे छिपा अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी जियोस्पेशियल डेटा संग्रह प्रोजेक्ट था, जिसकी तकनीक ने बाद में विनाशकारी सैन्य अभियानों को सुविधाजनक बनाया। गेम रिलीज होने के 4 साल बाद नियांटिक ने एक दिलचस्प नया फीचर पेश किया, AR मैपिंग कार्य। महत्वपूर्ण स्थलों द्वारा चिन्हित पोकेस्टॉप्स अब उपयोगकर्ताओं को AR स्कैनिंग प्रॉम्प्ट पूरा करने पर रिवार्ड्स की पेशकश करेंगे। इसके लिए खिलाड़ियों को अपने फोन के कैमरे से लगभग 20 से 30 सेकंड तक आसपास के क्षेत्र को स्कैन करना आवश्यक था। दिलचस्प बात यह है कि यह फीचर बच्चों के अकाउंट के लिए उपलब्ध नहीं था। खिलाड़ियों के नजरिए से यह फीचर अपेक्षाकृत हानिरहित था। वे पहले ही पोकेमॉन जियो द्वारा उनके स्थान को ट्रैक करने और उनके कैमरों तक पहुंच होने के आदी हो चुके थे। इसलिए जब नियांटिक ने गेम में सुधार के वादे के साथ मुफ्त रिवॉर्ड्स की पेशकश की, तो खिलाड़ी इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। नियांटिक ने दावा किया कि एकत्र किया गया डेटा गेम के इंजन को वास्तविक दुनिया की गहराई और जटिलता को समझने में मदद करेगा। इससे कहीं अधिक इमर्सिव अनुभव बनेगा, जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास की दुनिया के साथ सहजता से एकीकृत हो सकें। पीछे मुड़कर देखने पर ही
मतलब मैं अपना भी देखता हूँ सुनने लोग जीनियस की योजना जैसा लगता है। जिस व्यक्ति ने गूगल अर्थ बनाया और सीधे CIA और अंतरराष्ट्रीय खुफिया संगठनों के साथ काम किया, वो लोगों से स्वेच्छा से अपने आसपास की दुनिया को 3D स्कैन करवा रहा था, जबकि वे सोचते थे कि वे बस नाइंटिक को एक बेहतर पोकेमॉन गेम बनाने में मदद कर रहे हैं। ये स्कैन लाइटशिप VPS नामक एक बहुत बड़ी तकनीक को विकसित करने में मदद करेंगे, जिसका मतलब विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम है। GPS की सैटेलाइट आधारित तकनीक उपयोगी थी, लेकिन सर्वोत्तम ऑगमेंटेड रियलिटी अनुभव के लिए अनुकूलित नहीं थी। उदाहरण के लिए ये आपको ये तो बता सकता है कि आप किसी मूर्ति के पास हैं, लेकिन ये आमतौर पर ये समझने में असमर्थ है कि आप लैंडमार्क के सापेक्ष कहाँ हैं, चाहे आप उसके पीछे हैं या सामने, चाहे आप 3 फीट दूर हैं या 3 फीट दूर हैं या 30 फीट। रोड ट्रिप के लिए सामान्य दिशा निर्देश प्राप्त करते समय यह जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन के बेस कैंप पर सटीक ड्रोन हमले करने की बात आती है, तो ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। जब खिलाड़ियों ने किसी लैंडमार्क को स्कैन किया तो उन्होंने सिर्फ एक वीडियो से कहीं अधिक रिकॉर्ड किया। इसने उपयोगकर्ता के डिवाइस के अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई को ट्रैक किया। इसने फोन के एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप का भी उपयोग किया, जिससे सिस्टम को फोन की स्थिति और ओरिएंटेशन पर विचार करने की अनुमति मिली। इस सभी डेटा पर विचार करते हुए स्कैन का उपयोग लैंडमार्क और आसपास के वातावरण से उपयोगकर्ता की दूरी के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता था। जमा किया गया हर स्कैन अद्वितीय था, जिसे अलग अलग कोणों, स्थितियों और दूरियों से लिया गया था। प्रत्येक वीडियो को लगभग 300 अलग अलग छवियों में विभाजित किया गया था, जिन्हें क्षेत्र का पूर्ण 3D डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए अन्य स्कैन के साथ जोड़ा गया था। मूल रूप से नाइंटिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत 3D स्कैन तैयार कर रहा था, और पोकेमॉन जियो खिलाड़ी इसमें पूरी तरह से मासूम इरादों के साथ मदद कर रहे थे। VPS खिलाड़ी के लाइव फुटेज की तुलना इस आभासी दुनिया से करके उनके सटीक स्थान का पता लगा सकता था, जिससे ये तय करने में मदद मिलती थी कि वस्तुएं और पोकेमॉन वास्तविक दुनिया में कहाँ स्थित होंगे। सोचिए कि कैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में NPC कभी-कभी बिना किसी उद्देश्य या तर्क के इधर-उधर घूमते रहते हैं। शुरुआत में पोकेमॉन गो भी ऐसा ही था, लेकिन इस नई तकनीक के साथ पोकेमॉन को अब अपने परिवेश के साथ बातचीत करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। बिना कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिस्पेलो विथ व्हीट क्रिस्पीज, ब्रेक नहीं ब्लास्ट। ना सोचे समझे जमीन पर रखे जाने के बजाय वे अब लैंडमार्क के पीछे छिप सकते थे या उन पर चढ़ भी सकते थे। सरल शब्दों में इस तकनीक का लक्ष्य दुनिया की एक लगभग सटीक प्रतिकृति बनाना था, जैसा कि इंसान इसे अनुभव करते हैं, ताकि गेम में पोकेमॉन वास्तव में दुनिया के साथ उसी तरह जुड़ सकें जैसे एक इंसान जुड़ता है। और खिलाड़ी अपने दिन के 30 सेकंड कुर्बान करने को तैयार थे, अगर इसका मतलब मुफ्त पुरस्कार और भविष्य में बेहतर अनुभव था। और नवंबर 2022 तक नियंत्रिक ने खुलासा किया कि उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों के 120,000 से अधिक डिजिटल मानचित्र विकसित कर लिए थे। लेकिन इतनी शक्तिशाली तकनीक बेकार हो जाएगी यदि इसका उपयोग केवल पोकेमॉन जियो के लिए किया जाए। नाइंटिक की बात गहराई से समझता था। हालांकि उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य हमेशा लोगों को 21वीं सदी के खोजकर्ता बनने के लिए उपकरण देना है, लेकिन ऐसा लगा कि वे एक बड़ा अवसर गंवा रहे थे। लेकिन VPS की एक बड़ी सीमा भी थी। सिस्टम केवल उसी जानकारी को पहचानने में सक्षम था जो उसे पहले से दी गई थी। यदि किसी लैंडमार्क को केवल सामने से स्कैन किया गया था, तो पीछे से उपयोग किए जाने पर मॉडल उतना प्रभावी नहीं होगा। और यदि उसे किसी लैंडमार्क के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं मिली थी, तो इमर्सिव अनुभव प्रदान करने के लिए मॉडल के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अब 1 मिलियन विभिन्न पॉइंट स्थानों के लिए पूर्ण VPS एकीकरण करने हेतु पर्याप्त डेटा एकत्र कर लिया था, लेकिन अभी भी लाखों स्थान ऐसे थे जिन्हें पूरी तरह से स्कैन नहीं किया गया था। नियंत्रिक ने 2024 में घोषित अपने बड़े जियोस्पेशियल मॉडल के साथ इस समस्या को ठीक करने का प्रयास किया। इसका लक्ष्य उनके द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा को लेना और आंशिक रूप से बिना स्कैन किए गए स्थानों के बारे में अनुमान लगाने के लिए AI का उपयोग करना था। नियंत्रिक उदाहरण के तौर पर एक चर्च का उपयोग करता है। यदि खिलाड़ियों ने किसी चर्च के केवल सामने के हिस्से को स्कैन किया होता, तो VPS तकनीक पीछे से लिए गए फुटेज को पहचानने में असमर्थ हो सकती थी, लेकिन विशाल भूस्थानिक मॉडल हजारों अन्य चर्चों के पूर्ण स्कैन के आधार पर यह अनुमान लगा सकता था कि उस विशिष्ट चर्च का हिस्सा वास्तव में कैसा दिखेगा। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की क्षमता होती है। हम अपने परिवेश के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करने में सक्षम हैं। यदि मैं आपको किसी घर का सामने का हिस्सा दिखाऊं, तो आप शायद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका पिछला हिस्सा कैसा दिखता होगा। हो सकता है कि आप हर विवरण सही न बता पाएं, लेकिन आप लगभग उन्हीं जगहों पर खिड़कियां, एक पिछला दरवाजा, शायद एक AC यूनिट, बाड़ या आंगन की उम्मीद करेंगे। आपका मस्तिष्क उस विशिष्ट घर को नहीं जानता। ये उन हजारों घरों के पैटर्न को पहचान रहा है जिन्हें आपने पहले देखा है। नियंत्रिक चाहता था कि AI वही प्रवृत्ति सीखे, लेकिन लगभग पूर्ण सटीकता के साथ। और अपने विशाल भूस्थानिक मॉडल की घोषणा के कुछ ही महीनों बाद नियंत्रिक ने पोकेमॉन गो को बेचने का चौंकाने वाला फैसला लिया। जबकि स्कॉपली इनकॉर्पोरेटेड ने $3.5 अरब में नियंत्रिक के गेम्स कैटलॉग के अधिकार हासिल कर लिए। नियंत्रिक ने पिछले 1 दशक से विकसित किए जा रहे अपने सभी डेटा, शोध और तकनीक को अपने पास रखा, जिसमें उनके VPS और भूस्थानिक मॉडल शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति को अपने पास रखा, बाकी को बेच दिया, डेटा प्राप्त किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। पोकेमॉन को पीछे छोड़ दिया, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कभी पोकेमॉन की परवाह ही नहीं थी, और ये सब एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था। कंपनी ने अपना ध्यान वीडियो गेम विकास से हटा लिया और जॉन हैके के नेतृत्व में नियंत्रिक स्पेशल पर काम करना शुरू कर दिया। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तकनीक में ऑगमेंटेड रियलिटी अनुभवों को बेहतर बनाने की तुलना में कहीं अधिक संभावनाएं थीं। इसमें मनुष्यों और मशीनों दोनों को दुनिया को समझने और नेविगेट करने में मदद करने की क्षमता थी। पोकेमॉन कहाँ पैदा करना है, इस तकनीक का उपयोग रोबोट या AI संचालित वाहनों को GPS के उपयोग के बिना उनके स्थान निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु किया जा सकता है।
जैसे आप जानते हैं कि अपने शहर से बाहर होने पर आपको वास्तव में नहीं पता होता कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ हैं, लेकिन शुक्र है कि आपके फ़ोन पर जीपीएस की सुविधा है। खैर, वे मशीनों, रोबोटों या वाहनों के लिए एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से पूरी दुनिया की सटीक समझ स्थापित कर देगी। तो आप सैद्धांतिक रूप से इसे कहीं भी रख सकते हैं और ये ठीक जान जाएगा कि ये कहाँ है और इसे सबसे तेज तरीके से वहाँ कैसे पहुँचना है जहाँ इसे जाना। शुरुआत में इस टूल को ऐसी चीज़ के रूप में पेश किया जा रहा था जो विनिर्माण, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, निर्माण, पर्यटन, मनोरंजन और शिक्षा को बेहतर बना सके। जैसे एक वेयरहाउस कर्मचारी वीपीएस तकनीक का उपयोग करके सुविधा केंद्र में नेविगेट कर सकता है और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रक्रिया को सरल बना सकता है, बजाय इसके कि वो बस घूमकर जी समझे कि चीज़ें कहाँ हैं और उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन नियांटिक उन क्षेत्रों में भी शामिल हो रहा था जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ये तब स्पष्ट हुआ जब नियांटिक स्पेशल ने दिसंबर 2025 में वेंटर नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ने की घोषणा की। जहाँ नियांटिक की जड़ें गेमिंग उद्योग में थी, वहीं वेंटर हमेशा से खुफिया और रक्षा क्षेत्रों का हिस्सा रहा है। वे सैन्य कमांडरों और सैनिकों द्वारा युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण करने और समन्वय के लिए उपयोग किए जाने वाले मैपिंग सिस्टम बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये साझेदारी देखने में अजीब लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये एक बेहतरीन मेल था। Generate high-quality, human-like voiceovers in seconds with 11 Labs. Perfect for videos. वेंटर ने रैप्टर नाम का एक विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम विकसित किया था। वीपीएस के समान रैप्टर अपने वातावरण का विश्लेषण करके और निष्कर्ष निकालकर अपना स्थान निर्धारित करने में सक्षम था। जब कोई ड्रोन जीपीएस सिग्नल से डिस्कनेक्ट हो जाता तो वो वेंटर के अपने व्यक्तिगत मानचित्र के सापेक्ष अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए सड़कों, इमारतों और पहाड़ियों का आकलन करने के लिए रैप्टर का उपयोग कर सकता था। हालांकि यह तकनीक अपेक्षाकृत सीमित थी, क्योंकि यह हवाई ड्रोन फुटेज से डेटा एकत्र करती थी, जिसका अर्थ है कि इसका डेटा पूल केवल आकाश तक ही सीमित था। यहीं पर यह साझेदारी वास्तव में समझ में आने लगती है। वीपीएस सिस्टम वो सब कुछ करता था जो रैप्टर करता था, लेकिन जमीन के स्तर पर। विशेष रूप से इसने जमीन पर मौजूद सैनिकों के साथ साथ एआई नियंत्रित रोबोट और वाहनों को भी वही उपकरण दिए। आकाश में वेंटर और जमीन पर नियांटिक के साथ दोनों कंपनियां एक साझा डिजिटल मानचित्र बनाने की उम्मीद करती हैं, जिसका उपयोग ड्रोन, वाहन और लोग जीपीएस के उपयोग के साथ या उसके बिना जुड़े रहने के लिए कर सकें या उसके बिना जुड़े रहने के लिए कर सकें। क्या नियांटिक हथियार विकसित कर रहा था या सक्रिय युद्ध के संबंध में निर्णय ले रहा था?
नहीं, लेकिन वे एक ऐसी भूमिका निभा रहे थे जो शायद उतनी महत्वपूर्ण है। वे एआई संचालित ड्रोनों को यह समझने में मदद कर रहे थे कि वे कहाँ हैं और जमीन पर मौजूद कर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखने में उनकी मदद कर रहे थे। जो तकनीक मूल रूप से आपके पोकेमोन पकड़ने के अनुभव को अधिक इमर्सिव बनाने के तरीके के रूप में विपणन की गई थी, वो अब युद्ध क्षेत्र में ड्रोन, वाहनों और सैनिकों को समन्वय करने में मदद कर रही थी। नियांटिक रक्षा क्षेत्र का एक अधिक प्रमुख हिस्सा बनता जा रहा है। हाल ही में विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम को फेडरल मार्केटप्लेस ट्रेडविन सॉल्यूशंस के माध्यम से अवॉर्डेबल स्टेटस प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है कि सरकारी एजेंसियां सौदे करने और अपने उपयोग के लिए तकनीक खरीदने में सक्षम हैं और नियांटिक स्पेशल की वेबसाइट पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के साथ सौदे किए हैं। तो ये किसी तरह का पागलपन भरा षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है। पोकेमॉन गो के जरिए जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया उसका इस्तेमाल मैपिंग तकनीक विकसित करने में किया गया, जिसे असल में सेना इस्तेमाल कर रही है। मुझे नहीं पता कि पोकेमॉन गो के कितने खिलाड़ियों ने एआर स्कैनिंग में भाग लेने के लिए सहमति दी होती अगर उन्हें पता होता कि इसका इस्तेमाल सेना के लिए किया जाएगा, और इसीलिए अब ढेरों खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं कि उनसे सीधे तौर पर झूठ बोला गया और इससे सीधे तौर पर झूठ बोला गया। जब नियांटिक ने पहली बार एआर स्कैनिंग फीचर पेश किया तो कंपनी अपने इरादों के बारे में काफी हद तक पारदर्शी थी। उसने खिलाड़ियों से कहा था कि इन स्कैन का इस्तेमाल गेमिंग के बेहतर अनुभव के लिए किया जाएगा, और हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि इस डेटा का इस्तेमाल पोकेमॉन गो के बाहर के ऐप्स में होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने सैन्य रक्षा अनुप्रयोगों की उम्मीद की थी। इसलिए ऐसा लगता है कि इस तकनीक को बनाने का मकसद हमेशा से यही था। अगर आप सोचें तो नियांटिक वास्तव में कभी गेम डेवलपर थी ही नहीं। वे हमेशा से एक मैपिंग कंपनी रहे हैं। उनकी शुरुआत के बारे में सोचिए। जॉन हैके के पहले व्यवसाय की होल के सीआईए के साथ सीधे संबंध थे और बाद में उन्होंने गूगल के जियो डिवीजन में एक उच्च मूल्य वाली नौकरी की। उन्हें हमेशा से पता था कि सरकारें डेटा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार रहती हैं, और पोकेमॉन गो के साथ नियांटिक के पास ऐसी जानकारी की पहुंच थी जो कहीं और उपलब्ध नहीं थी। पोकेमॉन गो को एक परिवार के अनुकूल अनुभव माना गया था। इसने खिलाड़ियों को उनके बचपन के एक मुख्य हिस्से में पूरी तरह डूब जाने के वादे के साथ आकर्षित किया, जैसा वे पहले कभी नहीं कर पाए थे। ये जेनजी के कई लोगों के बचपन का एक निर्णायक हिस्सा भी रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर पोकेमॉन गो ने कुछ साबित किया है तो वो ये है कि आप वास्तव में कभी कोई गेम नहीं खेल रहे थे, गेम आपको खेल रहा था। और अगर गेम डेवलपर्स के पीछे के गहरे संदिग्ध इरादों को खोजना आपकी पसंद एक मिनट, एक फोल्डर का है चीज सर्च करना है। और सीधी रहमान ला 150 ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ above 100 the area operational data center depending on how as the smaller the gear मुंबईच्या नवी मुंबईच्या चेन्नई बेंगलुरु दिल्लीच्या हैदराबाद पुणेच्या बस सारे ना पंजाब च भी नहीं है डेटा सेंटर ना हिमाचल जा बस कुछ चार जिन्हें मुंबई च नवी मुंबई चेन्नई बेंगलुरु दिल्ली च नोएडा गुड़गांव fastest growing north operated government hub Hyderabad Pune the key to growing market for the area hyperscale that's it इन्हें कट data center है दिया पास 150 तो 200 इन्हें कट data center चल यूएसए च सर्च करना है और चार हजार 500 एक्टिव ऑपरेशन डेटा सेंटर अच्छा टोटल फैसिलिटीज 4500 नहीं 5400 टोटल फैसिलिटी
कर दे अचीवमेंट वगैरह बिल्कुल। अगर सोचा ही करा कि अच्छा तो फ्रेशमैन साइफर शायद एक्सेक्ट फ्रेशमैन साइफर ड्रॉप अ न्यू वीडियो देखिया किड़े नवे रैपर आया इंडस्ट्री च फ्रेश अच्छा फ्रीस्टाइल दिस इज अ वीडियो एवरीवन तो नहीं ओ अच्छा है नवे केड़ी वीडियो नवी केड़ी वीडियो रोक तो देखनी हम न्यू वीडियो ड्रॉप दो वीडियो ड्रॉप की उन्होंने कितनी वीडियो ड्रॉप की एक कार ड्रॉप की थी 9 दिन पहले एक 10 दिन पहले एक 12 दिन पहले मेन वीडियो कड़ी है प्रो मैं देख रहा हूँ देखो मैक्स ने और प्ले बॉय गाड़ी नहीं ब्लैक बॉय अच्छा ब्लैक बॉय अगर हाँ हाँ मोस्टली रहते म्यूजिक ही है नॉट फॉर हिम अच्छा ब्लैक बॉय मैक्स लाइव रहते होंगी चौड़ी चौड़ी में है कि हाँ हम वीडियो करने का नहीं ये जो कमरे ही अपलोड की थे प्लेटफॉर्म पे अच्छा ये लाइक अच्छा एक एल्बम भी आई है पर एल्बम शायद ये उसी दिन नहीं एल्बम आई है एल्बम तो है मैं रिएक्ट नहीं करूंगा अच्छा देर पहले ये वीडियो
केड़ी वीडियो कितना आया यार यही है या मे बी यही है रुक मैं सर्च कर ही था वीडियो नहीं मिलेगा अभी चैट शायद आई नहीं है Let's do that. किसी ने नहीं किया ना यार कहाँ पे होगी चैट आपको वीडियो नहीं दे चैट भाई एक बार लाइक कर यार लाइक है Luis, hi bro. शून्य वसीस और सोने और देखा लिंक देखा मेरा इंस्टाग्राम पे गीत है भाइयों गीत जो मैं अपनी वीडियो से काम करता है ज्यादातर मोस्टली लोग भी बस ना पानी को शायद पहले तो भाइयों पहले मैं ठीक है उसका है यही है 9 दिन पहले दिन लोगों ने शेयर है बाजू 10 दिन पुरानी है नहीं और शेयर पुरानी फिर यही है लोगों ने चलो उसके है क्या ये इतिहास है? ये इतिहास चलो जो भी हो मैं सुन के नहीं बंदा मेरा ये वीडियो बचाइए रियल वीडियो शायद 2 वीडियो लॉन्च की दिया मैंने पैसी प्रोडक्शन ठीक है भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे मेरे जैसा बनाया अगर वो जैसा बनाते तो मैं कुछ नहीं करूँगा जब जर्सी की बात आती है तो सोलानो या फेटी के अलावा भी ज्यादातर इसके बारे में ओ दैट्स फायर स्पिरिट है नॉर्मल कुछ की बात ये है You talking about Chris underground Bitcoin? You put your DJ drama beat right
Hey, okay, thank God he made me like me. If he made me like y'all, then I wouldn't be on shit. When it come to Jersey, if it ain't Solana or Fetty, they most likely talking about Chris. Underground Bitcoin, you put your money on me and I promise it's cash well spent. I need a plat that's attached to my name like I came from West Orange with Maxwell Dent. Came out the mud, ain't had no cosign on big homie. Draft they came up, they would skip on me. Come from the team, still got rookie of the year. I know there's some rat niggas sick of me. Them boys got tired of putting in pain. I put in pain when I didn't have energy. Zion Will, niggas y'all said was the one lost they place through the breaking from injury. Break through the industry, wasn't a fan favorite off the rip. I went from Jalen Brunson in a Mavericks jersey to the Jalen Brunson on the Knicks. Getting a double, show you if your niggas solid or if niggas with you is a bitch. I cut off 14 people in one fucking day when the world learned I made a list. I keep it thorough, baby, I don't trip. I couldn't skim on my product, I do it like Kimmy when it come to pushing a pound. Chris St. Patrick, moving like Curtis through streets in New York just to get to the path. Certified headhunter, see a golden, I promise I'm breaking them down. Niggas can't duck us forever, that Japanese hitter Otani level on a mound. Body bags on the ground, nigga ain't fucking with me like I'm Tank. Rap nigga dribble his ass all shit, my little cute, but he still couldn't get to the paint. I'm on a creep like I'm T-Boss and left eye and chili, I'm doing shit these niggas can't. Niggas is bums, they ain't fucking with Saint. These niggas is bums, they ain't fucking with Saint, you dig? Jersey. Come on, Larry. Come on, Larry. Hey, come on, Larry. You're in there. Come on, Larry. You're in there. Come on. Wow. Come on. The man on the corner just called me your prophet. The man in the mirror just got up and locked in. I am the man that did not be forgotten. I come from the south where the prison is rotten. 21 years consuming McDonald's. Niggas gon' turn in the nuggets out here. 70 years if you lucky right here. Let's get things clear while I'm thugging right here. Just made a thug smile from in the ear. He was mugging me outside on the corner. Who this nigga smile around here? He ain't want it. Ain't that dude with a shout from his idols? Ain't that dude with a shout from the GOAT? The wizard of reason, the way I went through potholes to get on the yellow brick road. Stand on shit till I prove it. Can't know what pass to the booty. Penetration to the pay attention to the student. Pay attention to the music. Selling dope shit like I'm Frank Lucas. I'm keeping the goofy like the Three Stooges. Salam alaikum, well you goofy. Woo, woo. Stay up on that beam. My name is Larry from New Orleans. Uptown, I'm keeping the G. I'm utilizing my time right now cause society be a time thief. You think it's for you? Now this one for me. This for the 12, this 7 and 3. You think it's for you? Now this one for me. This one for me. This for Larry. This straightforward like a shotgun house. Boot paint on the porch to keep ops out. But need apple bomb. You gotta put me on Q-tip to the bullshit. Getting blocked out. Can't lose focus on the feed right now. Best that I follow my dreams right now. Show the whole world who Larry is now. Cause I feel like the black Jew breeze right now. Boom! You there? Ain't no more regular living, we torn, I barely remember what day it is. Camera get put in your face and a young nigga turn to a motherfucking alien. Yeah. Know they gon' study my moves, they wait till a young nigga finally crash out. Had to take all of that pain, got rich, the hoe can't eat when I cash out. Take me a dose, yeah, I need it. Hey, nigga be mad, yeah, all of my business. Hey, know they gon' hate, yeah, when a young nigga winning. Hey, niggas be yapping, yeah, I know he a bitch. Hey, back of the sprinter, yeah, I'm black and the venom, got rats in the denim. Hey, bro, they said, Cam, you up next? Now they treat me like Plax in the making. Yeah, I'm moving through Europe, yeah, with demons. Yeah, I'm hitting these stages. Yeah, they will keep calling my phone trying to turn the little artist commercially basic. I cannot chase the pussy, can't jerry it. I'm not evil, but my twin, he nefarious. Oh, you hating, that shit is hilarious. Different color rubber bands, various. I feel like the one constant, the variable. Why he acting like he is not variable? Need someone smart, I can marry a fool. Got no chain, so I'm free just like Harriet too. Hey, McDonald's, you cool, no, I kinda act goofy. I stretch out my money like Luffy. Got the Mexican drone on my phone talking to me, but honestly, that shit a doozy. Hard in the bitch, if you cannot do this, nigga, shut the fuck up, don't talk to me. Whipping my whistle damn hard, they got eyes if it's on like I'm riding with Team Zoomy, damn. Shit not 50-50, cause I'm always gonna win, get up with me. I be getting chicken hella crispy. If you look at my lens, hella crispy. Yeah, these niggas, they rat 10 like they Mickey. And she want babysit, hold on. She want that baby sit, Icky Vicky. Red hat, call up Brock and Misty, bitch. Hype me up. Hype me up. Hype me up. Yeah, Holy Ghost on me, I'm out of my body, prayed up in the lobby, then turn up the party. I put 14 to get back to my shorty. I showed up and showed the folks how to live godly for real. Yeah, they want me on their team, then it's fine by me. Now the same ones trying to get signed by me. BET nominees when they saw it at me. Copy no stereotype on the radio, gang ain't doing no time to say. Been clocked in at the devil outside, I'll slide, man, I got some time today. Can't check me now. Moving, Lord bless these mouths. Kept it 100, can't test me now. Y'all only gave half like Epstein files. Y'all crazy. Say with the eyes on the goal, got Lil Zuko here to watch my blind spot. Last year we did wasn't loud, we turn up the crowd, felt like a headline slot. Lit up the scene, so hit up the team. Let them know we need a new time slot. Lifted his name more viral than Playboy Cardi, but you know I ain't lying, stop.
What? Take me to your bosses. Where's yo getting them upside down crosses? L27 has upside down losses. Slaps for the soul that actually go. There were about 500 racks in the dough. Had to pray on that like a mat on the floor, but I act like you know. Never thought I would reach these heights. All glory to Jesus Christ. Gotta make sure your people right. He gon' come like a thief in the night. Come on. Alright? It's a new mainstream now. Everybody know you can't box God in no more. Okay. Always won't win no more. Make a YN not wanna spin no more. Hey. Y'all thanking God but don't hang with God. Y'all think that's kinda odd. I plant a seed but don't look at me to save you, brother. That's not my job. Brother, that's not my job. Brother, that's not my job. Thinking the sweet and playing the streets in the bay, mess around and your car got robbed. Hey, be cautious who you gon' let sit beside you. All these Judas opportunists come to nickel dime you. What? Don't let these algorithms hypnotize you. West to the world, Jesus Christ, my only trip advisor. Come on. Let's go, man. Double XL, dog. I was just broke and lonely, now I'm rich, got all these kinfolk. If you ain't trying to make no bread, then what the fuck you here for? These niggas broke, they going fed, they out here giving info. See my niggas going fed, so let me change the tempo. I'm in the booth with Gmo, fuck a game, this ain't no demo. The whip all black is emo, with plenty straps, you think this tape, but this shit ain't no Vivo. Called Busy Killer on that gate, and all game said was ill. I know that money makes shit straight, but it don't make you real, nigga. It don't make you real, though. That's it, 2026. Freshman sophomore out now. They're promoting something and I'm just a part of that. It's a bone ready. Wait, this is the right one. Okay. अच्छा पहले इंट्रोड्यूस किया उन्होंने सारे नु चंगी तरह पे उन्होंने फ्रेशमैन साइकिल ओके ग्रुप पे आया तो थोड़ा बेटर किया पहले नंबर चैट रूम की हुई है चैट तो एंड द स्ट्रीम बंद करने का टाइम आ गया है क्योंकि लोग की पोस्ट कर रहे थे जीरो पोस्ट है मैं कितना स्ट्रीम करांगा Hey, I'm from Russia, bro. No, you're not here now. Hello, do you say why I'm on a second order? I'm not here. Chat chal koi क्या है मेरी stream पे टाइप की तब course maybe a second time. Shadow के बाद फिर stream एंड करनी बनी है. That आसान है तो शुरू. Oh, such cheese. Falling. Falling, dreaming, talking in your sleep. I know you want to cry all night. Plotting, scheming, finding reason to defend all of your violent nights. Promise me. Don't you grow up in a hurry. Your mama been worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights, thank you for all of the glory.
You will be remembered all. Thank you to all of the heroes of the night. They gotta repaint their colors. The lie is wearing off. Reality is upon us. Colors dripping off. Colors dripping off. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. To niggas had daughters, now they precautious. Father forgive me, I'm scared of the karma. Cause now I see women as something to nurture, not something to conquer. I hope she like Nicki, I make her a monster. Now having menages, I'm just being silly, I answer the door like Will Smith and Martin. Nigga, do we have a problem? Matter of fact, Marlon, this ain't Meet the Fockers. I beat his ass, pray I beat the Chargers. No daddy don't play, not when it comes to they daughters. Don't do no yoga, don't do Pilates. Just play piano and stick to karate. I pray your bodies, drink more like mine and not like your mommy's. Just being salty, but niggas is nuts. And I am a nigga, I know what they want. I pray that you don't get it all at once. Curves under your dress, I know it's pervs. All on the net, all in the comments. You wanna vomit, that's your baby, you love her to death. Now she cutting class and hanging with friends. You break a glass and say it again. She can't comprehend the danger she in. If you whip her ass, she moving with him. Then he whip her ass, you go through it again. But how you the devil rebuking the sin? Let's pray we could put this behind us. I swear that these times is the wildest. She got the scars, they serve as reminders. Blood still on her pajamas, but yesterday is dead, yeah. Moment of silence. Next should be off the collars and then at the altar. Cause she know that niggas is savage. Niggas is monsters. Niggas is pimps. Niggas is players. To niggas had daughters. Niggas is pimps. Niggas is players. To niggas had daughters. Don't you grow up in a hurry. Your mama be worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights. Thank you for all of the glory. You will be remembered all. Thank you to all of the heroes of the night. They gotta repaint their colors. The lie is wearing off. Reality is upon us. Colors dripping off. Colors dripping off. I'm saying it like, I want a daughter like Nicki. Aw, man, I promise I'm gonna turn her to a monster, but no menages. I don't know how he's saying it, but let him hear this.